Yeah, I have received it now. Okay, thank you very much. Okay, first of all, I'm really thankful to Mr. Mukesh Sahai जी. इनके साथ एक बहुत बड़ी इमरजेंसी या ट्रेजेडी हुई थी. अभी इनका मेरे को व्हाट्सएप मैसेज आया था. इनके एक फ्रेंड का जो है बेटे का कोई स्वेयर एक्सीडेंट हो गया. डिस्पाइट दैट, ही हैज गिवन अस अ टाइम एंड हमारी कहते हैं ना, हमारी घर में आके, जब हमारी वेबिनार में आके हमारी वेबिनार की शोभा उन्होंने बढ़ाई. और आई एम रियली रियली थैंकफुल टू मुकुल जी कि इस थोड़ी सी टेंशन के अंदर भी आपने टाइम निकाला और करा. मैंने सर ये रिक्वेस्ट करी थी कि आप कोशिश करना 3 बजे के आसपास अगर ज्वाइन कर लो, तो बिकॉज आप हमारे चीफ गेस्ट हैं, तो सर अच्छा तभी लगता है जब की गेस्ट सबसे पहले हो. बाकी हम लोग तो आपस में बात करते ही रहेंगे. तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट यानी कि यू आर अंडर इवन अंडर दीज सर्कमस्टांसेस आपने हमारी आईपा को और हमारे वेबिनार को इतनी इज्जत बख्शी. And I'm really thankful for that. नवनीत जी, नवनीत जी, थोड़ा सा सर का, वैसे सर तो एक राउंड पर्सनैलिटी है हमारे दिल्ली सर्कल के अंदर. पीएनबी और ये जब सुनील चुकी हो गए, ये तो एक ऐसी पर्सनैलिटीज है कि जो यानी कि वी ऑल नो एवरीबॉडी वेरी वेल इन पीएनबी. बट स्टिल एक थोड़ा सा ट्रेडिशन होता है, तो प्लीज थोड़ा सा सर का इंट्रोडक्शन दीजिए, सो दैट हमारे बाकी ऑडियंस जो हैं दे कैन आल्सो लिसन टू देम. नरेंद्र जी नमस्कार, हम आपको बनाने में देख रहे हैं पूरी तरह से. हाँ जी, चलिए. Thank you. But we understand, we appreciate your enthusiasm of joining to us. चलिए ठीक है. That's really admirable. That is really admirable. मनोज जी का कहना है कि फेसलेस का जमाना है, तो उससे आगे बढ़ना चाहिए. चलिए कोई बात नहीं. थैंक यू मनोज जी. हाँ जी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी को थैंक्स करना चाहूंगा कि भाई सभी ने ज्वाइन किया इस समय. एंड बिल्कुल दोपहर के समय सारे आके ज्वाइन कर रहे हैं. दैट शोज की भी ठीक है, वी वांट टू लर्न द न्यू थिंग्स अबाउट दिस आईबीसी. और आज हमारे स्पीकर भी काफी अच्छे हैं. एंड लकीली मनोज जी ने एक बड़ा अच्छा काम किया कि मुकुल साय जी को बुलाया. तो एक चीज बड़ी अच्छी है, बिल्कुल उनको बुलाना हमारे प्रोफेशन का बिल्कुल रेलेवेंट चीज है अगर देखा जाए तो. इफ आई विल बी रीडिंग आउट हिज प्रोफाइल, उन्होंने बड़ा छोटा सा क्रिस्प सा प्रोफाइल अपना भेजा, बिल्कुल छोटा सा. बट स्टिल गोइंग बाय हैविंग डिस्कशंस विद मनोज जी, आई कैन से कि भाई मुकुल जी इज वर्किंग इन दिस एरिया स्पेसिफिकली. एंड उनके जो व्यूज होंगे वो हम सभी के लिए काफी कहते हैं ना बेनिफिशियल होंगे. दैट इज व्हाट आई कैन से. अभी मुकुल जी पीएनबी में एस जीएम काम कर रहे हैं जोनल रिकवरी सेंटर में, दिल्ली जोन. And इन्होंने as a probationary, he started as a probationary officer, worked in different segments of the banking industry practically. If we see कि भाई आज की डेट में, क्योंकि अगर हमें देखा कहाँ से मिलता है, जो लोगों ने बैंकिंग में अच्छे तरीके से काम किया है और अगर वो हम लोगों को कोई भी चीज गाइड, तो हम सभी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाती है. And that is what you can say Mukesh Sahai ji will be telling us. He has worked in operations, credit, recovery, जो हम सबसे ज्यादा बात करते हैं रिकवरी के एरिया में. And that too not only restricted to Delhi, in various different states, Gujarat, MP, Haryana, Delhi, Punjab. So he is having very vast experience in these areas with regard to recovery. Not only recovery, when we are talking about, हमारा आईबीसी क्या चीज बोलता है, रिजोल्यूशन करना है. But he is working since long in the resolution only. And if we can see, he has handled recovery and resolution panel vertical of the Amritsar zone of PNB. And right now same portfolio Delhi zone का ये देख रहे हैं. So he is having very wide exposure with regard to recoveries and resolutions. Sir, welcome to you, and we will be looking forward to you for having your you can say specific experience. You please share your experiences and whatever the expectations from IPs are there. We would love to hear from you, sir. Thank you. Over to you, Manoj ji. Thank you, नवीन जी. नवीन जी हमारे बहुत एक्टिव मेंबर हैं. He is a CMA and quite active in CMA Institute also. सर सबसे पहले मुकुल जी, I would like कि आप थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा हमारे को एनलाइटन करें. have some words for VIPs. वैसे मैं आपको you are aware of it, but still I remind you, हमारा आज का टॉपिक MSME है कि how they can do recovery either under IBC or DRT or some the MSME Samadhan scheme.
And please, sir, enlighten us with your vast knowledge and experience. Thank you, Manoj. And I'm really privileged to part of this team. And I thank you, especially Manoj, for giving me opportunity to associate with you persons, eminent persons through this platform. And hopefully by interacting with you, or in fact, my viewpoint is that when bankers interact with you people, it's open new horizon for us to learn many more things, practical things from you. We as a banker have the opportunity to interact with so many persons, but through this channel, we really find views and so many informations from so many eminent speakers, learned IP learned persons. So it's a very good opportunity for me. So at the outset, I once again thank Manoj to invite me to this group, and hopefully I would like to be associated with this group and try to improve my knowledge about the subject. So starting with recovery from bankers' perspective, I think so far as MSME is concerned, we all know that MSME is the growth engine of the country. It gives employment to close to 11 to 12 crores of persons. It contributes altogether 30% to the GDP. And not only that, it has the contribution of 50% towards the export of the nation. So far as today's topic is concerned, how we can, I think, Manoj, today's topic is that how we can ensure recovery in MSME. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What are different tools? So, and yes. Sir, our speaker is also joining. So just please carry on. Oh, right. I'll take, because I would like to hear more from our speakers. No, sir. Bankers. We are keen to hear you. I'm sorry, I'm interrupting you. We are very much keen to hear you. Please, please carry on. Yes. So from bankers' perspective, it is very important that MSMEs are given proper support and proper guidance to ensure that this segment progresses rapidly and profitably. And for this, from banker perspective, we have been supporting, and we have come through so many tools to support. We had also recently OTR scheme was also there. One time restructuring this dispensation was allowed by Reserve Bank of India, through which we tried to support MSME segment. Credit guarantee scheme floated by Government of India during COVID period was also one of the tools to give relief to MSME segment. So as I told, MSME segment is very important, and we have to really, as a banker and as a citizen of this nation, it's our duty to support MSME so that the growth of the country is there, or means the GDP growth or the credit growth which we have projected should continue unhindered. So under this segment, we have a lot of NPAs, and so we have so many schemes to address those issues. First thing is that, coming to the recovery part, we have IBC. Recently, PPIRP was introduced by government through this IBC under IBC 2016. But I think we all will agree with the fact that it is not in progress, and progress in the sense that we are not getting any fruitful outcome out of this dispensation, and we have yet to see how much it can be effective, and we have to test the water under this segment. So far as other recovery in MSME segment is concerned, and to address the issue of NPA, so far as Punjab National Bank is concerned, we have a special one-time settlement scheme through which we give good relief to MSME borrowers to just mitigate their difficulties. Apart from that, as DRT is also there,
But overall, as a banker's perspective, we always see that MSME segments are given proper relief so that they run, they run and they can be the they can contribute in the growth of the nation by way of giving employment. And as I said, it contributes 50% towards export, 30% in GDP. So it is our duty as a banker to ensure that all the MSME segments, they should be fully protected. They should be given full support. And even if it turns into NPA, we have to ensure that proper relief and proper help should be given to those segments to come out of this situation. And so as a banker, we have many tools. As I said, IBC 2016, though it is not very effective as of now under PPRAP, but one-time settlement scheme, this is very, very useful from bankers' perspective. Samadhan, MSME Samadhan is already there. And so I'm quite hopeful that through this dispensation, we can give a lot of support to MSME segment so that the growth of the nation goes unhindered so far as this segment is concerned. Thank you, Manoj. Thank you, Mukulji. Thank you very much. I welcome Mr. Anup Lahiri also from NCLT, and I think he is listening to me. चलिए, sir, Sir, आपने OTS की बात करी. OTS is a very, it should have been a very popular tool because इसका अंदर मैंने ये देखा है, आप पेनल्टी का तो 100% वेवर दे देते हैं, इंटरेस्ट का भी डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस काफी सब्सटेंशियल वेवर दे देते हैं, और मेनी अ टाइम्स यू आल्सो गिव सम सॉर्ट ऑफ वेवर फॉर द principal amount also. But despite this thing, I've seen, basically हमारे IBC के अंदर दो तरह की एप्लीकेशन जाती हैं, एक सेक्शन 9 की 7 की जाती है और एक सेक्शन 9 की जाती है. सेक्शन 9 की एप्लीकेशन के अंदर मैंने देखा है सेटलमेंट बहुत जल्दी हो जाती है, और सेक्शन 7 की जो एप्लीकेशन होती है उसके अंदर OTS कह लो या कुछ और कह लो, इतना ज्यादा प्रेवलेंट नहीं है जितना कि हमारी सेक्शन 9 के अंदर है. बट आई अंडरस्टैंड, it is because of the limitation of the CD, क्योंकि सेक्शन 7 के अंदर शायद अमाउंट बहुत बड़ा होता है और सेक्शन 9 के अंदर अमाउंट कम होता है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच CD is willing to go for it. ममता जी, आपका क्या ओपिनियन है? परवीन जी, यू मे आल्सो कमेंट ऑन इट. सर, जो आप कह रहे हैं ठीक है. जैसे सर ने बोला कि भाई आज की डेट में MSMEs की ओर काफी ज्यादा ध्यान जा रहा है, सरकार का भी है और ऑल एजेंसीज प्रैक्टिकली. और जो आपने बोला कि स्पेसिफिकली कि भाई सेक्शन 7 और 9 की एप्लीकेशन के रिलेटेड आपने बात की और OTS की बात की, उसमें एकदम बिल्कुल सही चीज है. जहाँ पे छोटा अमाउंट होता है, सेटलमेंट के लिए थोड़ा आसानी रहती है, ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, बैंकर्स के लिए भी आसानी रहती है एक बार कि छोटा अमाउंट है, हमें क्लोज करना मैटर को, लेट अस ट्राई टू क्लोज दैट. जहाँ पे बड़े अमाउंट्स होते हैं, खास करके इफ देयर इज ए कंसोर्शियम, आई हैव प्रैक्टिकली सीन कि कंसोर्शियम जहाँ पे है और वहां पे अगर कभी OTS की भी बात होनी शुरू हुई तो वो पूरा सिरे चढ़ी नहीं. और कभी कभार तो ये हुआ कि भी इनफैक्ट OTS के चक्कर में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने मान लिया, कुछ इन कैपिटल इन्फ्यूज करना था, 3 बैंकर ने दे दिया, 1 बैंकर ने नहीं दिया. एंड वी हैव सीन प्रैक्टिकली अंडर IBC कंपनीज गेटिंग कोलैप्स ड्यू टू दीज इश्यूज. तो ये एक सर थोड़ी सी चीजें हैं जहां पे सभी का ध्यान प्रैक्टिकली जाना चाहिए. अगर हमें कोई भी चीज OTS करना है या IBC के अंडर एप्लीकेशन वगैरह के अंदर हम जा रहे हैं, तो अच्छे तरीके से फैक्ट्स एंड फिगर्स को देके ट्राई टू गेट इट, क्या कहते हैं, एडमिटेड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल, दैट वी शुड बी एमिंग एट प्रैक्टिकली. सर, मैडम आपकी ओर से, ओवर टू यू मैम. Thank you Mukul ji for being with us. It's a great honor for all of us. Sir, I will just try to tread a path which is a little, I've felt it myself, that why is there a route of where we recall the entire loan after being declared as an NPA? So, the person has not been able to give his installments, maybe which could be about 5 crores, 8 crores. But the moment he's turned as an NPA, we kind of recall the entire loan of 2,000 crore and 2,500 crore. And then we say that you pay it or else, we are taking you to the stick of IBC. Why? I know it's a point that maybe Mukulji, you also will not be able to encounter it now and then because it's a process that we are following from ages.
But I feel that there should be something, a narrative should be built up where the person is maybe called upon to pay 4 times of what he has failed, or 7, 10 times. Because if you ask a person to pay 2,500 at one go and you say that, oh, you are an NPA, the tag of NPA itself is not then enabling him to get a loan from anywhere. And then he has to go with a bowl to a private lender who actually charges him 30%, 28, 30%. And so we are actually then pushing the person deeper into trouble rather than actually giving him a helping hand. So Mukulji, I totally understand your perspective, though we will love to hear from you that is the norm. What is it that Mr. Sahai could do about it? Because you also have to follow the norm. But I guess now that we are a progressive country, and we believe in doing things what others are not doing, and we believe in innovative solutions, can we think about building this narrative where we are trying to bring those companies out of a Section 7 application? In Section 7 application, and maybe 2-3 more minutes, may I request for myself. We have also seen that there are a lot of these OTS letters which has been given by the promoter. By and large, 89 or 90% of the promoters would be fair people. Maybe as an aberration, we will find some people who, as an aberration, we find everywhere, be it a family or be it a larger family, like a society that we live in, that people are not so fair. So in that case, we're actually hurting the 90% of the people who are doing fair business. Now, the point that I'm trying to make is that there is a consortium agreement. There are so many cases which is getting in the DRT, where where the company's assets have been sold by the bankers. And parallelly, we also run a NCLT Section 7 application. So there is a thought in everybody's mind that where in one part you are trying to sell the assets. You means the Section 7 applicants are trying to sell the assets because that's a right of recovery because of the SARFAESI law. And on the other side, we want the company to get resurrected because that is the objective of a Section 7 application or objective of a NCLT application. So it is a dichotomy that if that corporate debtor is being actually, all the assets are being sold off, what is the resurrection that then gets left behind in a Section 7 application where we talk of rehabilitation as per the objectives of IBC? So, and there are then consortium agreements that, Mr. Sahai, is there where you say, okay, an X bank will be only eligible to take the company. Yeah, thank you. I went on a mute. So, Sahaji, I was just thinking, I don't know what to talk beyond this, but sometimes, as lawyers, we also get pain to see that, oh, this promoter was quite an honest promoter and he's not been able to save the company and so many employment. That's the reason I thought I'll just bring this point. Hello. Yes. Yes. As Madam suggested, she has rightly told that when a company goes into problem, entire amount should not be recalled. But as a banker point of view, I will say that this has been the practice and this has been more or less law-related issue. So in practical sense, she has very rightly pointed out the things that by asking or recalling all the amount, we are putting entrepreneur into another sort of problem. So it's a really very relevant question, but it will have to consider in the very holistic manner by the Reserve Bank of India, because it's a macro level issue. So, but it's worth considering. But still, I'm of the view that so far as banking practices and law are concerned, when default occurs as per the prevalent practices, as per the agreement, we don't have any option but to recall the entire amount. This is the law. But ultimately, main point is that we always try for solution, how the company can be rehabilitated, or how if the amount of loan involved is
to the extent where we can enter into OTS and get the account settled, we also look toward this thing. So, of course, Madam Mamta had rightly pointed out, and it's a point worth considering at apex level. I totally agree with her that by recalling all the amount, we put company in a deep trouble, and rehabilitation chances are really difficult when we recall entire amount. But still, things are there as per the law, and this point needs to be deliberated at apex level. But point is relevant. I agree. हमारे मुकेश मोहन गुप्ता जी जो आज के स्पीकर हैं, he has also come out. Sir, we welcome you there. Please unmute yourself. Sir, आप अपने आप को unmute कर लीजिए. Sir, thank you very much. नमस्कार सर. Sir, you are shining like anything. आपको तो देखना हो, या तो टीवी पे देखे आदमी, या आपको ऐसे वेबिनार में पकड़े, अदरवाइज तो पकड़ में आते नहीं हो. सर मैं क्षमा चाहता हूं सर. नवनीत जी, yeah, please welcome our Mukesh Mohan Gupta ji. Thank you. Thank you, Manoj ji. Mukesh ji, on behalf of IPA and all the members present over here, we welcome you. थैंक्स कि आप हमारे आईपा में आए और आज की डेट में आप हमारे सारे मेंबर्स के लिए काफी अच्छे तरीके से कुछ ना कुछ उनके लिए गाइडेंस दे के जाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है. मनोज जी ने मेरे को एक काम दिया, उन्होंने कहा कि नवनीत यू प्लीज इंट्रोड्यूस मुकेश सर, एंड आई गॉट योर प्रोफाइल. व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द प्रोफाइल आई वाज रियली आस्क्ड, बस क्या मैं पढ़ क्या रहा हूँ, इतना बढ़िया सर आपका प्रोफाइल देख के ना पर्सन तो पहले ही हो जाता है कि हाँ यार क्या प्रोफाइल है सर का, और आज सर से काफी अच्छी चीजें क्या कहते हैं सीखने को मिलेंगी. फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स, मैं सर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा. सर इज CA by profession and having over 30 years of experience in different areas: auditing, accounting, finance, law, banking, economics, MSMEs. But अगर आप ध्यान से देखें तो उनका जो फोटे प्रैक्टिकली रहा, दैट वाज इनटू MSME सेक्टर. दैट इज व्हाई मनोज जी ने उनको स्पेसिफिकली इस चीज के लिए आज के टॉपिक के लिए चुना, क्योंकि इट इज प्राइमरली MSME related webinar. That is why Mukesh Mohan ji was invited. And a few more, I'll take 1 or 2 more minutes. इनका खैर प्रोफाइल काफी लंबा है, कहें तो हम पूरा वेबिनार इसी पे खत्म कर सकते हैं सर का प्रोफाइल बताने में ही, बट आई टेक फ्यू मोर मिनट्स क्योंकि मेरे को काफी अच्छा लगा. एंड वी वुड लव टू टेल ऑल द ऑडियंस अबाउट योर अचीवमेंट्स एंड अनदर थिंग्स, सो दैट जब हम किसी को सुन रहे होते हैं हमें भी अच्छा लगता है कि द पर्सन हु इज गोइंग टू टेल अस, he is such a dignitary and there is a weightage in his words. Whatever he is telling, we need to seriously understand his words. Sir has held the directorships in the banking industry also with Dena Bank and the PSUs also, Hindustan Fertilizers Corporation Limited also. सर मैं आपसे मुकेश जी थोड़ा सा माफी चाहूंगा, आपका प्रोफाइल पूरा नहीं पढ़ूंगा, बट जो मेन चीजें हैं वो मैं जरूर बताना चाहूंगा ऑडियंस को. एंड स्पेशल अचीवमेंट सर की एक बड़ी अच्छी लगी मेरे को, विच इज यू कैन से ड्रीम फॉर एवरीबॉडी प्रैक्टिकली. He was invited by our Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to have a discussion on the current economic situation, especially for MSMEs. That is one very good thing. And he spent approximately 3 hours in a meeting with the Honorable PM along with another business leaders. On the MSME side, it was really wonderful. His achievements are really wonderful. He was a member on the National Board of MSMEs, Ministry of MSME. He was part of a key advisory group on MSME, DFS, Ministry of Finance. सर देखिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज में भी हैं सर, ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक खाली हमने अकाउंटिंग का एरिया देख लिया या कुछ कर दिया. इन द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज he has proved his forte, and he was member of the working group formed by Ministry of MSME. सर आपका प्रोफाइल काफी ज्यादा लंबा है, बट ये सभी के लिए एक सर अच्छी चीज है
Sir was, in fact, not only part of various committees, but if we see, he has presented various reports also to the ministries for the benefit of all the stakeholders. And if see, he has presented the report on suggestions for timely and adequate MSME sectors to the then President Shri Pranab Mukherjee. Sir, a lot more is there. A lot more is there. Apart from that, he in fact initiated one talk with the MSME ki Pathshala and one positive talk with Mukesh Mohanji on TV channel, where he invited various dignitaries, had interviews. So all the big dignitaries like Piyush Goyal ji, Jitendra Singh, Raj Mishra ji, with all the ministry, he had interactions. Sir, welcome, hearty welcome to you, and we would love to hear from you about the different aspects of the MSME, how we can going for you can say reduce these particular NPA type of problem in the MSME sector, how the IPs can help MSMEs. Over to you, Manoj ji. थैंक यू अब नवनीत जी की बात को हम कहते हैं ना घाघर में सागर में गागर में डाल के इसी करके अपने मुकेश जी को थोड़ा सा इनके बिजी शेड्यूल में से इनको थोड़ी सी रिक्वेस्ट करी कि आप MSME के ऊपर इनके क्या क्या रिकवरी टूल्स हैं इसके ऊपर हमारे को एनलाइटन करें। सर एक्चुअली हम लोग मुकुल साहब जी के साथ काफी थोड़ी सी लंबी डिस्कशन करते रहे विच यू नो आपने भी थोड़ा सा कहा मैं लेट आऊंगा तो उस चक्कर में मैंने भी इस चीज को एक्सटेंड कर दिया। नाउ वी हैव टू ऑप्शन, वन इज दैट कि वी कैन स्टार्ट विथ यू, और जैसा हमारा वेबिनार के अंदर हमने शेड्यूल बनाया था, आई नीड टू टेक 15-20 मिनट्स टू एनलाइटन द माय पी ब्रदर्स, जो भी हमारी पिछले हमारी जो लास्ट मीटिंग हमारी एक आधा महीना पहले हुई थी उसके बीच में जो हुआ है। तो सर जैसा आप कहते हैं हम वैसा कर लेंगे, देन आई कैन टेक दिस टॉपिक लेटर ऑन एज यू फील कंफर्टेबल। Sir, it is always pleasure to listen to you, and it will be my pleasure to listen to you now also. So may I kindly rather request you, Manoj ji, to please enlighten us all, in fact, and it will be my great pleasure to listen to you. Please, sir. I'm really honored, thankful, and with the kind consent of Mamta ji and Navneet ji, I'm starting my presentation. This is a very small introduction of mine. This is, we always take privilege of introducing our IPA to everybody. We formed this organization 4.5 years ago. We have around 70 members. In fact, since last 4 years, we're not taking any new membership, because initially when we formed this organization, we got so many live members there that we are just feeding them up. But very soon we'll be opening up for new membership also, because I'm receiving many queries on daily basis. The IPs are asking me to make them the members also. Our objective is solely to take care of IP's problem and their development. We are running around 15-20 WhatsApp and Telegram groups, whereby we enlighten all our members, and in fact all our non-members also on daily basis. And I heard in many webinars कि जैसे क्या कहते हैं लोग धीरे कहते थे कि मैं जब सबसे पहले उठता हूँ तो आईपा का जो व्हाट्सएप मैसेज आ उसको खोल लेता हूँ, बिकॉज उससे फिर ये लगता है कि क्या एक दिन के अंदर या एक या 2 दिन के अंदर क्या नई डेवलपमेंट हुई है। मेनली दीज वेबिनार्स हमारे ममता जी इज वेरी एक्टिव, जो भी लेटेस्ट केस लॉज होते हैं जो रेलेवेंट होते हैं हमारे आईबीसी के लिए, वी शेयर ऑल दोस। एंड इफ एनी वन ऑफ यू आल्सो वांट टू जॉइन आवर आईपा ग्रुप, so he can make a request to us in chat box. We shall definitely add to him there. Our future roadmap is to expand horizontally and vertically at national level. In fact, we are at presently a national level organization, because हमारा objective ही यही था कि हमने जब नया दिसंबर 2016 में IBC आया था, तो उसके immediately 6 महीने के बाद हमने अपनी organization form कर ली थी। तो हमारा objective we have members from scattered all over India. It's not confined to Delhi or Calcutta or some skeleton phrases only. And now we are thinking of creating जहाँ पे भी NCLT के benches हैं, which are around 20 के आसपास हैं, उन सब जगह पे हम लोग एक head बनाना चाहते हैं, and but horizontally also
जैसे कि हमारी अभी डिस्कशन हो रही थी, जैसे आज हमने एक एमएसएमई को चुना है, तो वी आर थिंकिंग कि हम एक एमएसएमई का वर्टिकल हेड बनाएं, एक क्रिप का वर्टिकल हेड बनाएं, एक लिक्विडेशन का वर्टिकल हेड बनाएं, so that because lot of things are coming from the IBC side, and so that we can do everything so those vertical heads also. Okay, I was supposed to take 15 minutes, but it's already 3:40, and sir Mukesh ji, आप 1 घंटे का आपके लिए slot रखा है, लेकिन we'd like to get enlightened more from your expertise. अगर हम MSME का नाम लेना, जैसे MSME हमारे लिए एक सेक्टर है, तो अगर MSME का कोई बॉस है ना, या MSME का कोई किंग है, तो वो मुकेश जी हैं। तो हम किंग से, आज हमने किंग और लाइन को पकड़ लिया है, तो हम उनसे मैक्सिमम सुनना चाहेंगे MSME के बारे में, कि MSME में रिकवरी की बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये कौन सा टूल है प्रेजेंटली, और अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कौन सा टूल बेस्ट है। And after that, when we hear from Mukesh ji, then me, Mamta ji, Navneet ji, and Mukul Sahai sir also, and on another senior persons also can enlighten us. Shall have a panel discussion and enlighten our audience. And in fact, I shall request कि जो जितने भी हमारे participants हैं, they should also come out with their queries and questions and answers. Now I'm starting with my latest developments and issues. इसको मैंने 3-4 पार्ट में डिवाइड करा है. Firstly, as I told, IBB has sent out a lot of discussion papers. The subsidiary cases by DC, is taking a lot of head toll of all our IPs, and it's really a very worrisome for every IP who's sincerely working for the IBC. Then I'll be taking out some latest judgments also, which जो हमारी लास्ट सेमिनार हमारा अप्रोक्सीमेटली 1 महीना पहले हुआ था, लास्ट 1 महीने के बीच में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं, जजमेंट्स को बड़ा ब्रीफली लूंगा कि उनके अंदर जो कंसेप्ट है सिर्फ उसी को लूंगा और उसी को मैं सबके साथ शेयर करूंगा कि वो हमारा कंसेप्ट क्या है. Yes, section 194R, it is going to have a very high income tax applications in all IBC cases. मुकुल साहब सर, मैं आपसे छोटा सा शेयर करना चाहूंगा कि ये सेक्शन बेसिकली ये कह रहा है कि इसका मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ कि अगर सपोज कर लो किसी का 100 करोड़ रुपया आपने किसी बोरोवर से लेना था, आपने उसका प्लान 20 करोड़ रुपए का एडमिट कर लिया, जब 20 करोड़ रुपए उससे सेटलमेंट कर ली, 80 करोड़ रुपए का आपने उसको बेनिफिट दे दिया, तो ये सेक्शन ये कहता है कि उस 80 करोड़ के अगेंस्ट 8 करोड़ रुपया आप गवर्नमेंट को टीडीएस जमा कराओगे. अब मेरे को बात ये समझ नहीं आ रही कि if we plainly read this section, it says like that, and it's a very very big burden on all the plans which are going to be admitted, or all OTRs which are going to be admitted after 1st July 2022. I hope through IBBI or through your IBA, something terribly has to be done and make the government to exclude this thing. ये थोड़ा सा डिटेल में जब मैं इस पे आऊंगा तब बोलूंगा. वी आर एन आईपी, हमारी आईपी से चलिए मेन काम आईबीसी है, लेकिन हमारा बैलेंस शीट्स को भी अगर हमारे कंसल्टेंट जब वो बनाते हैं तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आई हैं. आई वुड लाइक टू कॉशन माय ऑल सीए ब्रदर, आईपी ब्रदर, चाहे वो सीएमए सीएस जो भी केसेस हैंडल कर रहे हैं, कि देयर आर वेरी वेरी बिग चेंजेस इन द शेड्यूल 3. बी टेक केयर फॉर देम. अब बैलेंस शीट का सेशन भी स्टार्ट हो गया, तो बैलेंस शीट बननी स्टार्ट हो गई है. तो मैंने जो अभी लेटेस्ट जो डिस्कशन पेपर्स आए हैं, मैंने इनके बारे में बात करी है. तो हम डिस्कशन पेपर्स को हम डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि हम डिस्कशन पेपर को स्टडी करना की स्टार्ट करेंगे तो एक एक डिस्कशन पेपर आधा घंटा ले लेता है. इसके अंदर हम लोग जो रोड मैप हम अपने आईपीएस के लिए, जब बाकी यानी कि जो भी आईबीसी से रिलेटेड जो बंदे इसके अंदर हैं, उनके लिए हम ये करते हैं कि हम इंटरनली हम लोग कुछ यानी कि सजेशंस प्रिपेयर करते हैं कि बिकॉज ये हर क्या कहते हैं डिस्कशन पेपर के अंदर, ये वो डिस्कशन पेपर है जिनके अंदर आईबीबीआई हमारे से सजेशंस मांगता है. फॉर एग्जांपल क्रिप के बारे में आया, फाइनेंशियल सेल्फ सफिशिएंसी के बारे में आया, स्ट्रीमलाइनिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस के बारे में आया, enabling entities to become insolvency professional आया, और एक और आया रेमुनरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स. तो इन सब के अंदर 30 जून जैसे लास्ट डेट थी. होपफुली हमारे जितने भी कोलीग्स हैं, हमने सबके साथ शेयर करा था कि ये आप आईबीबीआई को सबमिशन दो. तो हमारी सजेशन और अपनी उनकी जो विजडम था उसके अकॉर्डिंगली सबने करा होगा. और अब जो है एक जो 15 और 17 तारीख को आने वाला है, इसके बारे में भी हम लोग इंटरनली बना के
यानी कि 15 अगर है तो उसके 3-4 दिन पहले, और 17 है तो उससे 3-4 दिन पहले यानी कि आईपा की तरफ से जो हमारी सजेशंस होगी हम सबके साथ शेयर करेंगे। एंड माय हम्बल सबमिशन और रिक्वेस्ट इज कि जब हमारे को IBC एक अपॉर्चुनिटी देती है अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए, तो प्लीज अपना व्यू पॉइंट रखिए। ये हार्डली वहां पे सबमिट करने के लिए सिर्फ कट एंड पेस्ट होता है, 3 या 4 से ज्यादा मिनट नहीं लगते। तो आफ्टर गोइंग टू द IBC साइट, तो प्लीज दिस इज my request from the IPA side, please everybody should log into the IBC site and give suggestions. हमारी तरफ से जो suggestions होंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। Yes, disciplinary cases जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी, it's just taking lot of lot of strength or lot of killing we IPs for doing the work. और इनफैक्ट अब ये हो रहा है कि मैंने आई एम सीइंग इट नाउ कि अगर जो आईपी है, आईपी के साथ अगर उसके बाद एडवोकेट का काम डिग्री भी है, तो वो प्रेफर करता है कि मैं लिटिगेशन कर लूं, ना कि आईपी का काम करूं। जबकि अगर हम देखें तो आईपी का काम मेन है, आईपी के काम से ही सारे काम जनरेट होते हैं, चाहे वो वैल्यूएशन का काम हो, या वकालत का काम हो, या ये हो। जैसे अभी पीछे जी जो 5 तारीख को सुनील कुमार अग्रवाल जी का यहाँ पे हुआ, अभिषेक गुप्ता जी का यहाँ पे हुआ, जोगेश कुमार गुप्ता जी का यहाँ पे हुआ, केद्रम रामरतन लाडा जी के यहाँ पे डीसी ने लिया, मिस्टर पार्था ने यहाँ पे डिसीजन लिया, मिस्टर श्रीनिवासन कार्तिजन ने यहाँ पे इसका डिसीजन लिया। तो ऑल दीज थिंग्स टेक मिस्टर, ये यानी कि आप ये देखिए कि पिछले 15-20 दिन के अंदर ही मैंने कुछ केसेस आपके सामने लिखे हैं जिसमें डीसी ने डिसीजन ले लिया। जब डीसी ने इनके अगेंस्ट डिसीजन लिया, डिसीजन हमेशा, मैं इसका डिसीजन कह रहा हूँ बिकॉज दैट इज एन ऑनरेबल अथॉरिटी, कि ये डिसीजन जो भी लिया ये कोई फेवरेबल तो था नहीं एज फार एज दैट आईपी वाज कंसर्न। और अगर जब उनके लैप्सेस को देखें तो उनके लैप्सेस बिल्कुल प्रोसीजरल थे, जहाँ एक यानी कि वी कैन से विद इट कि इतने को इंटेंसिव जब फ्रॉडुलेंट नहीं थे कि वेयर बाय द काइंड ऑफ पेनल्टी और द काइंड ऑफ सस्पेंशन दे हैव बीन पुट एंड पुट ब्लैक मार्क इन देयर कैरियर। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा वी आर रियली वरीड। In fact, not only we, but a whole community who's working for IBC is really worried for that. लेकिन इसके लिए फिर हमने कहा कि एक स्पेशल सेशन हम नेक्स्ट सैटरडे को रखते हैं, वेयर वी आर कॉल्ड सम वेरी ऑनरेबल रिस्पेक्टेड एडवोकेट्स, कि जो इस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के ऊपर बात करेंगे। अभी हम इसके ऊपर दिस इज माय ओनली फूड फॉर थॉट गिविंग टू यू। Okay, now I come out to the judgments. एक अभी सुप्रीम कोर्ट ने वेरी, ये हमारे थोड़े से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने देयर वाज अ बिट कंफ्यूजन कि हम पर्सनल गारंटर के केस में जब तक उसके वहां पे क्रिप स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, हम उनके अगेंस्ट क्या कहते हैं प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2 कंफ्यूजन ये आ रहा था कि अगर सपोज कर लो उनके उस पर्टिकुलर गारंटर की जो भी वो सीडी है, उस सीडी के अगर हम लोगों ने बिगाड़ सीडी गोज टू द, यानी कि सीडी बिफोर गोज टू द क्रिप, तो उसकी जो एप्लीकेशन हम डीआरटी में फाइल करेंगे या एनसीआरटी में फाइल करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने दे हैव इन दिस केस महेंद्र कुमार जडेजा वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के केस में उन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि in case of guarantor you have to file the application only with the concerned NCLT whether CRIP has started against them or not। और jurisdiction इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, jurisdiction जहां पे सीडी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहीं पे उसकी jurisdiction आती है। तो this is their saying। Okay, now there is always, जब भी हम लोग IBC का काम करते हैं तो इसके अंदर हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि we need to comply with all the tax laws, all SEBI laws, all GST laws and all this thing। एक बहुत अच्छी जजमेंट आई है हाई कोर्ट की, आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू। ये तेलंगाना हाई कोर्ट ने करी है, सिरुपुर पेपर मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर उन्होंने कहा कि इफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स नो
कि यहाँ पे दो तरह के नोटिस आते हैं 143(2) और 142(1) के अंदर। तो उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जब ये क्रिप पीरियड के अंदर कोई इस तरह का नोटिस आता है तो दैट इज नॉट लीगली वैलिड। रीजन फॉर दैट इज दे हैव गिवन इट कि यानी कि जो आईबीसी प्रोसीडिंग्स है आफ्टर मोरेटोरियम अंडर सेक्शन 14, वो उनके ऊपर कोई भी केस कंटिन्यू नहीं किया जा सकता था। सिमिलरली इनकम टैक्स केसेस भी उनके ऊपर कंटिन्यू नहीं किए जा सकते, मीनिंग देयर बाय कि अगर क्रिप पीरियड के अंदर रूटीन के अंदर भी कोई इनकम टैक्स असेसमेंट के अंदर या अगर हम इसको एक्सटेंड करें वैट के अंदर या जीएसटी के अंदर कोई डिमांड अराइज होती है तो दैट विल बी यानी कि नॉट लीगली टेनेबल। लेकिन एज फार एज माय पर्सनल ओपिनियन इज कंसर्न, I am little bit have my different opinion against this because बहुत सारी हाई कोर्ट्स ने including दिल्ली हाई कोर्ट, including Allahabad High Court has given contrary judgment against that. On the issue that they say कि जो ये हमारी इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स है या ये 143(2) का नोटिस है या 142(1) का नोटिस है, ये एक रूटीन प्रोसीडिंग्स है और जब ये रूटीन प्रोसीडिंग्स है तो इसके अंदर आपने अगर कोई रिटर्न फाइल करी तो जो टैक्स डिटर्मिनेशन की अथॉरिटी या पावर है वो कंसर्न असेसिंग ऑफिसर के पास है, तो ही हैज टू एक्सरसाइज इट डज नॉट tantamount to any case against the CD. Hence, any demands raised consequently because of all this thing is legally valid. मनोज जी हाँ जी जी, ऑडियंस की ओर से रिक्वेस्ट काफी आ रही है साइटेशंस शेयर करने के लिए। या मैं साइटेशन सारी की सारी शेयर कर दूंगा, इसी करके मैंने लिंक साथ में दिया हुआ है और जैसे ही मैं अपनी ये क्या कहते हैं शेयर करूंगा, स्लाइड शेयर करूंगा उसके साथ कर दूंगा। और उस या ये एक एनक्लेयर जजमेंट आई है लोक शर्मा वर्सेस आईपी कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड थ्रू आरपी अनुज अग्रवाल। इस जजमेंट का एक हमारे यहाँ पे अगर जैसे हमारे यहाँ पे एक आईबीसी है, आईबीसी के अंदर होम बायर्स अपने आप में एक अपनी ही एक क्लास है आईबीसी की, तो उनके अंदर तो उसके अंदर एक बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। मेनी अ टाइम्स इट वाज हैपनिंग कि एक होम बायर ने बिल्डर को या सीडी को सारी पेमेंट कर दी और पोसेशन भी ले लिया, लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं करी, उस सीडी ने उसकी रजिस्ट्री नहीं करी और उसके बाद अल्टीमेटली वो जो केस था आईबीसी के अंदर आ गया। अब कंफ्यूजन ये हो रहा था कि जो ऑनरशिप है उस पर्टिकुलर घर की जिसकी रजिस्ट्री नहीं हुई वो होम बायर की होगी या क्या नाम इसका सीडी की होगी। तो इस चीज को एनक्लैट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट के अंदर बड़ा क्लियर कर दिया है। जस्ट गो विद द लिंक। लोक शर्मा वर्सेस इसके अंदर बड़ा क्लियर उन्होंने कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि इस केस में होम बायर होगा वही ऑनर रहेगा और ये कंसर्न आईपी को ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि अगर आपने इनसे कुछ बैलेंस अमाउंट लेना है जो जनरली मेंटेनेंस वगैरह का और छोटे मोटे कोई चार्जेस होती हैं वो आप लेके इनके नाम पर रजिस्ट्री करिए। उसका रीजन और लॉजिक ये दिया है कि ये जो इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज ये जितने भी फ्लैट्स वगैरह बेचते हैं तो दिस ऑल इनकम कम्स आउट इन देयर रेवेन्यू। इन केस ऑफ अदर देन कंस्ट्रक्शन कंपनीज उनका ये कैपिटल एसेट होता है, तो इन दैट केस इट इज ए कैपिटल गेन। तो आपके केस में जब आपने उनसे जो पैसे लिए उसको अपनी इनकम में बुक कर दिया और आपने एक रजिस्ट्री नहीं करी उनके नाम पे तो इट इज अ प्रोसीजरल डिफॉल्ट। और जब कोई किसी भी काम के अंदर कोई प्रोसीजरल डिफॉल्ट होता है तो इट शुड नॉट एक्सीड टू द मेन सब्सटेंटिव ट्रांजैक्शन, हेंस यू शुड गो फॉर इट। जो भी आपने इनसे थोड़ा बहुत पैसे लेने हैं जो आपके साथ निकलती हैं वो लो और इनके नाम पर रजिस्ट्री करो। इट इज अ वेरी वेरी बिग रिलीफ टू द होम बायर। आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज दिल्ली के अंदर हमारे नोएडा बड़ा बदनाम एरिया है, इसके अंदर ये वो होता ये था प्रैक्टिकली मेनी टाइम्स कि बिल्डर जो होता था जो सीडी जो होता था पैसे पूरे ले लेता था, किसी न किसी बात पर रजिस्ट्री नहीं करता था और बाद में आईबीसी में चला जाता था अपने आप को सेव करने के लिए। नो, और जो होम बायर होता था ही वाज लाइक ए पेंडुलम, पैसे भी उसने दे दिए रजिस्ट्री उसके नाम पे नहीं हुई और अब करे तो करे क्या, और आईबीसी के अंदर केस चला गया और उसको ये लगता था कि मेरा मकान मेरे हाथ से ना चला जाए। तो दिस एनक्लेट हैज वेरी rightly said, I should not say use word rightly, has interpreted the sections and said कि ये जो है इसका मालिक जो है वो होम बायर रहेगा। Another fourth judgment which has very recently come from the NCAD also, it says कि we encourage settlement, but we don't. What happened in this case is that I just open the link. Okay, I think I'm not. I give you the crux of the judgment. In this case, what happened कि जिन्होंने section 7 या 9 की application file करी हुई थी, they went to the NCLT and said कि भैया आप सीडी को डायरेक्शन दे दो कि ये मतलब सेटलमेंट कर ले।
तो इस केस में एनसीएलटी ने कहा, earlier NCLT had said the same thing also, and later on NCLAT also confirmed this their decision कि हमारे पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिसमें हम 12A के अंदर इस तरह की कोई डायरेक्शन दे सके। अगर आपका CD या SY प्रमोटर्स मानते हैं आपके साथ मिलके with a buyer from the lender, then it is okay. We can't give any this type of instructions or okay. Section 194R. Section 194R. ये एक्चुअली बेसिकली एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है जो एप्लीकेबल हुआ है 1 जुलाई 2022 से। ये बेसिकली मैं आपको थोड़ी सी जस्ट अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेसी ऑफ दिस सेक्शन 194R, आई जस्ट शेयर विद यू कि ये जब हमारे सीतारमन जी ने बजट दिया था तो उसके अंदर उन्होंने ये कहा था, ये कहा था कि जैसे मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने डीलर्स को सिंगापुर ले जाती हैं या दिवाली पे सोने के बड़े बड़े गिफ्ट दे देती हैं, तो अपने यहाँ पे तो खर्चा क्लेम कर लेती हैं, बट it is a perquisite in the hands of recipient, in the hands of those in the hands of those dealers and all this thing. तो वो अपने यहाँ पे इसको डिक्लेयर करते नहीं है and they simply enjoy this money, क्योंकि सेक्शन 28 हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर वो ये कहता है कि एनी रिसीट्स ऑफ बिजनेस नेचर इज योर इनकम, लेकिन इस इनकम का कोई कैश नहीं होता था, तो एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच they were not showing it there. Just to get hold of this thing, इन्होंने ये कहा कि इस तरह के बेनिफिट जो भी दिए जाएंगे, देखा गवर्नमेंट कैसे पकड़े इस बात को, उन्होंने कहा जी हम इसके ऊपर टीडीएस काट लेते हैं, जो आपको पैसे दे रहा है वो टीडीएस काट लेगा, जब टीडीएस काट लेगा तो हमारे को पता चल जाएगा कि इस बंदे के ने ये आपसे पैसे लिए, देन कंपल्सरली ही हैज टू डिक्लेयर इनकम। तो उसके लिए सेक्शन 194R लेके आए। ये था सीतारमन जी का जब उन्होंने स्पीच दी, लेकिन एज हैपेंस हमारे जो थे यानी कि बोर्ड ने या जो भी हमारी सीबीडीटी था, उन्होंने इस जो परक्विजिट था इसको एक्सटेंड कर दिया बेनिफिट के अंदर ऑल्सो। जब इसको उन्होंने बेनिफिट के अंदर एक्सटेंड कर दिया तो इन्होंने ये कह दिया है कि ए बंदे से बी बंदे को कोई भी बेनिफिट मिलता है अंडर ए बिजनेस ट्रांसैक्शन, इन दैट केस उसके अगेंस्ट आपको 10% या टीडीएस काटना है। इसको जैसे मैं एग्जांपल से मैंने पहले भी समझाया था, आई जस्ट रिपीट दैट एग्जांपल अगेन। अगर सपोज कर लो किसी पीएनबी ने मिस्टर ए लिमिटेड से 100 करोड़ रुपए का लोन लेना है, अब 100 करोड़ रुपए का लोन लेना है तो उनके पास दो ऑप्शन आई। एक ऑप्शन आई कि उनके पास रजिस्ट्रेशन प्लान आया, मान के चलो 10 करोड़ रुपए का, एज रिजल्ट ऑफ 90 करोड़ रुपए का उन्होंने बेनिफिट दे दिया कंपनी को। तो दिस पर्टिकुलर सेक्शन सेज कि आपको 9 करोड़ रुपए टीडीएस काट के जमा करवाना है। इसका वे आउट सिर्फ एक ही है कि अंटिल आईटीओस के पास पावर होती है अंडर सेक्शन 197, दे कैन अप्लाई टू द आईटीओ एंड गेट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम देम कि हमारे पे टीडीएस ना काटे। लेकिन 197 के अंदर वो पावर जो होती है बड़ी मुश्किल से आईटीओ यूज करता है और उसकी कोई अपील भी नहीं है। ओनली थिंग लाइज इज टू फाइल इट इन द हाई कोर्ट। तो दैट्स वेरी कम्फर्टम प्रोसेस, आई मीन टू से। तो ये इसके ऊपर इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर बहुत अच्छा था आर्टिकल भी आया था, तो आई शैल शेयर इट विद यू। तो बेसिकली इन नटशेल ये कहते हैं कि व्हाट इधर आईबीए और आईबीबीआई मस्ट राइट टू द गवर्नमेंट एंड से दैट कि ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर 10 करोड़ रुपए का रेशन प्लान है, अगर 9 करोड़ रुपया उसको टीडीएस जमा कराना पड़ेगा तो 1 करोड़ रुपया देगा क्या उससे, बिकॉज 9 करोड़ रुपए तो उससे ही रिकवर करेगा ना बारोर से, तो एवरीथिंग विल गो इन जेपरडाइज। तो इस चीज को कवर करने के लिए नीड टू रिक्वायर सम stringent measures either from the IBBI or from the IBA, so that और आईबीसी से मैंने इस करके इसको लिया बिकॉज हमारे आईबीसी के अंदर ये जब भी हम रेशन प्लान बनाते हैं या अप्रूव करते हैं तो टैक्सेशन या और भी कोई कॉस्ट होती है उसको वी हैव टू कंसीडर सो दैट हमारी जो ऑप्टिमाइजेशन है, जो हमारी रेशन प्लान है उसकी वैल्यू बढ़े। शेड्यूल 3 इट्स अ बिट लॉन्ग, ऑलरेडी 4 बज गए हैं तो आई वोंट गो फॉर इट। इसमें बेसिकली मैं बता देता हूँ कि जैसे हम लोग शेड्यूल 3 के अंदर 2 तरह की बैलेंस शीट बनाते हैं, एक इंडियाज की बनाते हैं और एक नॉन इंडियाज की बनाते हैं। इंडियाज की बैलेंस शीट हम वहां बनाते हैं जहाँ पे एक स्पेसिफाइड लिमिट है 5 करोड़ की टर्नओवर, 250 करोड़ की बोरिंग उनके ऊपर की हो। तो उनके अंदर काफी सारे जो चेंजेस आ गए हैं, चेंजेस जैसे 2-3 मेजर चेंजेस ये हैं कि हमारे को इसके अंदर पहले हमारे को सिर्फ शेयर होल्डर की डिटेल देनी होती थी अबव 5%, नाउ वी हैव टू गिव डिटेल ऑफ प्रमोटर्स आल्सो, यानी कि उस शेयर होल्डर ने किसी और कंपनी में करा, किसी और कंपनी में करा, तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। पहले हमारे को फिगर्स ये मैंडेटरी नहीं थी, वी कैन गिव फिगर्स इन एनी फॉर्म,
like rupees mein, hundreds mein, lakhs mein, crore mein there. Now that discussion has been closed off. Now we have to give figures either in lakhs or in crore और इन थाउजेंड्स, तो ये डिपेंडिंग ऑन द टर्नओवर। तो इस तरह से काफी सारे चेंजेस हैं। इसके ऊपर मैंने एक पीपीटी अलग से बनाई हुई है व्हिच आई शेयर्ड विद माय अनदर सीए ब्रदर, वो मैं आपके साथ भी शेयर कर लूंगा। बट अभी आई वोंट डेल्व इनटू डिटेल इनटू इट बिकॉज इट इज नॉट एब्सोल्युटली टू द आईबीसी। मेरा सिर्फ इसको बताने का पर्पस ये था कि अब बेनिफिट का सेशन बन रहा है, तो हम भी एज एन आईपी जब हम बेनिफिट बनवा रहे हैं या खुद बना रहे हैं, वी शुड बी एनलाइटेंड एंड टेक एक्स्ट्रा केयर फॉर इट। इसके साथ कॉर रिपोर्टिंग के अंदर भी काफी चेंजेस आए हैं, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर भी काफी चेंजेस आए हैं, तो प्लीज बी कॉशियस एंड रीड ऑल दिस। Thank you very much. I have taken more than 50 minutes, which was allotted to me. Now I request, I'm stop sharing my screen. Now I request Mukesh ji to enlighten us with his deliberation. Mukesh Mohan Gupta ji, please, you're welcome. Please start your deliberation. Mukesh ji, I think please So actually, नहीं, Sir, I suppose that permission to share my screen is not there. okay, just wait a moment, sir. So just see if you are able to share your screen. yes, sir. Your screen is visible now. It's visible, sir? Absolutely Yes. visible, crystal clear. Thank you, sir. Thank you very much. So first of all, I would like to really extend my heartiest thanks to Manoj Anand ji for giving me this opportunity. In fact, to learn a lot, I'll say, because I am here to learn a lot and I started learning. Manoj ji, thank you very much for your nice, beautiful, very knowledgeable presentation. And as far as my subject for today is concerned, I have been asked to give some details on MSMEs and the ways and means these MSMEs can recover their funds. So let me start. And I know one very important thing that, मुझे ऐसा लगता है कि शायद very learned participants in this webinar are there. They are much more learned than me, but still I'll try to explain something about MSMEs and the ways I feel that they can use for faster recovery of their dues. So MSME, this Micro, Small and Medium Enterprises Development Act was, as everybody knows, and that this act was introduced in 2006 on 2nd of October. And there was definition, in fact, being defined that how the categorization of micro, small and medium enterprises will be done. Since 2006, there was a demand by all the stakeholders that, that definition should be, that amount, the threshold limit should be increased. Then the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises issued a notification on 26th of June 2020, wherein the definition of micro, small and medium enterprises has been revised. So 2-3 very important thing I would like to share here. So this is the old definition of micro, small and medium enterprises, which was based on the investment in plant and machinery in case of manufacturing sector and investment in equipment in case of service sector. So there were two categories, manufacturing sector and service sector, and definition for manufacturing sector and service sector were different. Basis was the same, that the investment in plant and machinery or investment in equipment. For manufacturing, it was investment in plant and machinery, and for service sector, it was investment in equipment. The old definition was, micro, small, medium enterprises was starting from 25 lakhs, then 5 crore and up to 10 crore rupees. And for service sector, it was 10 lakh, 2 crore and 5 crore rupees.
Now, what a ministry has done, that they told that will not differentiate between this manufacturing sector and service sector. There will be one category. So micro, small and medium enterprises, be it manufacturing or be it service sector. The second very important change has been done through this notification of 26th of June 2020 is that, earlier the basis of classification of these micro, small and medium enterprises was only investment in plant and machinery. Now there are two basis on the basis of which we can classify micro, small and medium enterprises. So one is investment, of course, and the other is turnover of the enterprise. So micro enterprises, those enterprises which have investment up to 1 crore rupees, be it manufacturing or be it service sector, and the turnover is up to 5 crore. Small is investment up to 10 crore and turnover up to 50 crore, and medium category is investment up to 50 crore and turnover up to 250 crore. When I say this and, please underline it, because both the conditions have to be fulfilled for classification of any enterprise into micro, small or medium enterprises. So suppose the investment in any enterprise for against plant and machinery is up to 1 crore rupees and the turnover is 5 crore 10 lakhs rupees, it will fall in small categories because of both the conditions have to be fulfilled. So these investment and turnover are now linked with the income tax and GST. And when we say that it will be linked with the income tax for investment in plant and machinery, very important thing, because in income tax we mentioned the written down value. Earlier it was the gross value, the purchase value, but now the written down value will be considered from the day of this notification. In fact, this was applicable from 1st of July 2020. So basically this definition has increased in multiple folds, because पहले होता था कि जो purchase value है उसको हम लेते थे for the basis of classification, but now only written down value will be considered. So maybe the gross value may be 100 crore, but if it is after a lot of depreciation, the written down value is up to 50 crore, it will be classified under MSME, in no doubt about medium category. All tangible assets other than land and building and furniture will be now considered under plant and machinery. That is correct also. As far as turnover is concerned, very important modification has been done, that export turnover will be excluded while calculating the turnover for the purpose of classification of this micro, small and medium enterprises. So suppose there is some company which is a 100% export oriented unit, so its classification will be based entirely on investment in plant and machinery, because turnover will be zero. And if turnover is 100 crore and export turnover is 90 crore, so the turnover which will be considered for classification under this micro, small and medium enterprises will be only 10 crore rupees. My request here to all my professional friends, those who have not done their Udyam registration, which is called, earlier it was called Udyog Aadhar registration. Now with this notification being made by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, in this same notification, they mentioned that, how the registration for the MSME will be done, and they have informed that, the Udyog registration, which was earlier only registration for classification under MSME, will be changed to now Udyam registration. There have been many extension for conversion of Udyam registration to from Udyog Aadhar to Udyam registration. There have been many date extension, but last date was 30th of June 2022. So just 4-5 days, 9 days have passed in fact. So सरकार ने कहा है कि if you have उद्योग आधार registration, please do convert it into registration. तो अभी आपको सबको अपना उद्यम registration, as I told that, manufacturing and service sector both can get this उद्यम registration because they are micro, small and medium enterprises.
because trading is not covered under MSME, but manufacturing and service sectors are two sectors which are covered under MSME. There has been a notification recently by Ministry of MSME for trading sector. It has been told that traders can also register themselves as MSME. They can get the Udyam registration, but that is only for the purpose of priority sector lending. So no other facility, no other scheme will be available to the traders. Only manufacturing and service sector can avail and can get the registration under MSMED Act 2006. So these are the two websites. So you can go either at udyogadhar.gov.in or udyamregistration.gov.in. Registration is absolutely free of cost. There is no fees to get the registration. No document has to be uploaded for getting the Udyam registration. So my suggestion to my colleagues, the participants here, please get your Udyam registration today itself. Because there are many schemes, many facilities. One I will discuss today regarding the timely payment to these micro small enterprises. Normally I give this suggestion also that on your invoice, please get your Udyam registration printed along with your GST number if possible. And in the footnote also you mentioned that you are an micro, small and medium enterprises under MSME Act. सर इसमें एक आधा क्वेश्चन आया, अगर कहो तो मैं ले लूं जो बाद में ले। सर मुझे वही सबसे अच्छा है, मेरा आप ना मुझे कम समय दीजिए, और क्योंकि ये मेरी अच्छी परीक्षा होगी और मेरा लर्निंग का प्रोसेस भी यही है सर कि मैं कुछ जिनके जवाब होंगे उनके जवाब दे पाऊंगा, नहीं तो मैं आज ये वेबिनार खत्म होते ही सबसे पहले वो पढ़ने की कोशिश करूंगा और फिर आपको जरूर मेल से बताऊंगा। तो प्लीज सर आप बताइए। सर एक्चुअली रवि जी ने क्वेश्चन करा है कि सपोज कर लो एक पर्टिकुलर बिजनेस है, वो मान के चलो कि 2021 में उसकी टर्नओवर इस तरह थी कि वो MSME था और 2022 में उसकी टर्नओवर चेंज होगी, एज पर टर्नओवर ही इज नॉट एलिजिबल टू बी MSME। तो वो जो उसका MSME का स्टेटस है वो किस पीरियड से किस पीरियड तक रहेगा और उसके बाद कब वो यानी कि ही विल बी आउट ऑफ MSME? वेरी गुड क्वेश्चन सर रवि जी. So I would answer this question. What happened, in fact, when this Udyog Aadhaar registration was there was a provision that in case of any upward transformation from micro to small, small to medium, medium to large sector, in case whenever it happens, the company or the enterprise will be able to avail the benefit of MSME Act for 3 years after the date of conversion, right? Now it has been changed, in fact, with the new notification. अब उन्होंने कहा है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में ये हो रहा है चेंज, उसके 1 साल बाद तक only you can get the benefit of any scheme being announced for micro, small and medium enterprises. Okay. प्रवीण जैन जी के 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि शायद इन्होंने थोड़ा सा मिस कर दिया होगा कि टर्नओवर की डेफिनेशन में ट्रेडिंग टर्नओवर इंक्लूड होगी नहीं होगी, नंबर 1। और नंबर 2 कि अगर जैसे ट्रेडर्स के ऊपर लिमिटेशन है MSME के लिए कि सिर्फ उनको एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए ही they can get benefit of MSME. So is there any planning tool for them to get benefit of MSME? So there is a demand by the traders, in fact, since many years, in fact, to include themselves also under this micro, small and medium enterprise, which has not been accepted by the government. What happened recently, I'll tell you something because all are professionals here, so I can share the things which maybe the behind the scene jo hoti hai na sir, I would like to share that also, why it happened and what was the purpose basically for considering these traders as MSME, and what is the object and for which purpose these traders have been allowed to take this Udyam registration. So what happened, in fact, when this Udyam registration concept was introduced and the new definition was introduced in 2020 by Honorable Minister of MSME Gadkari ji, there was some question from Reserve Bank of India to Ministry of MSME, and they asked that for the priority sector lending, now what should be considered as far as the micro and small enterprises, because MSEs are the priority sector borrowers. The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises confirmed that now
MSME, any MSME will only be those who have their Udyam registration or Udyog Aadhar registration for a specified period till it is not being withdrawn in total. That created a lot of problem to the bankers. In fact, since I also had been on the board of a public sector bank, I know what is this mean in fact, because RBI then issued a circular that to all the banks that you now reclassify your advances from for the purpose of priority sector lending and non-priority sector lending. Abhi, the problem is that government always says that we have 6.33, 6.34 crore MSMEs. But as far as registrations are concerned, when the Udyog Aadhar registration was in place, something around 1 crore enterprises were registered on this Udyog Aadhar registration. और जब ये नोटिफिकेशन इशू हुआ फॉर ट्रेडर्स इनफैक्ट, तब उस दिन तक करीब 40-45 lakhs केवल एंटरप्राइज ही अपने आप को रजिस्टर करवा पाए ऑन दिस उद्यम रजिस्ट्रेशन. So there was a big problem, many bankers even at the level of CMDs, EDs talk to me for 20 minutes, half an hour, 1 hour. What should we do? Because if they classify these advances and non-priority sector advance, उनका जो target है कि 20% होना चाहिए in priority sector lending, वो सब गड़बड़ हो गया. Perhaps Mukul Sahay ji will be well aware of this thing in fact. और जो प्रायोरिटी सेक्टर का जो गैप होता है, बैंकर्स आर मैंडेटेड टू इन्वेस्ट दैट गैप इनटू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जहां पर उनको 2-3-4% का इंटरेस्ट मिलता है. तो मे बी दे विल बी पेइंग इंटरेस्ट ऑन एफडी ऑफ 5-6% प्लस ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एंड जो गैप रहेगा उस पर उनको ब्याज मिलेगा 3-4% टू बी इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. सो इट वाज ए बिग प्रॉब्लम फॉर द बैंकर्स. इनफैक्ट उनकी प्रॉफिटेबिलिटी सारी गड़बड़ हो जानी थी. सो दे रिक्वेस्टेड इनफैक्ट टू द मिनिस्टर ऑफ MSME, परहैप्स ट्रेडर्स वर आल्सो अप्रोचिंग देम. सो मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन निकाला दैट ट्रेडर्स कैन आल्सो नाउ गेट देयर उद्यम रजिस्ट्रेशन और उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, and there was some condition to that this Udyam registration will be only for the purpose of priority sector lending. No other facilities will be available to these traders, meaning thereby कि उनको थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम मिलने की संभावना हुई, लेकिन उसके अलावा कोई और बेनिफिट नहीं हुआ. एंड जैसे प्रवीण जी ने पूछा कि आने वाले समय में क्या ऐसा कोई मिनिस्ट्री का कोई ऐसा कोई आइडिया है कि वो ट्रेडर्स को भी कंसीडर करें एज MSME. So I'll say कि for other purposes perhaps there is no idea before the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, as far as I know currently, to include these traders as MSMEs for all the purposes. Thank you very much. Please, आपकी बाकी स्लाइड शेयर करिए please. So the one of the biggest problem I feel being faced by these MSMEs is delayed payment by their buyers. And normally हम लोग तो देखते हैं, because I always day night I discuss with these MSMEs in fact, तो छोटी छोटी भी इनके ड्यूज होते हैं. और कभी ऐसे ऐसे लोग हमें मिलते हैं, किसी का ड्यूज 50,000 है, किसी का 10,000 भी ड्यूज है. एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट उसका बिजनेस ही अगर सपोज किसी का 1 लाख रुपए का है, बहुत छोटी सी वो कोई बिजनेस करता है, उनका अगर कोई 40-50,000 20,000 अगर कोई पैसे नहीं देता है, perhaps they will be bound to actually close their unit, which we have seen in many cases. और ये बहुत बड़ा भी हो सकता है. कभी ऐसा भी हमने देखा कि 50 लाख 60 लाख 80 लाख, and in crores also these MSME face this problem in fact. So this is a big threat to the MSMEs as far as their ability to trade is concerned. Why I am saying this thing, because suppose I am doing a business and my some amount is stuck up with my debtors, I get the opportunity to have some other order, but मैं वो लूंगा नहीं. मैं कहूँगा कि अभी मेरा पुराना पैसा ही जो है वो नहीं आ रहा, तो मैं कैसे अभी दूसरा जो ऑर्डर है वो मैं कैसे लूँ. तो इसलिए many times they are not able to take the fresh orders in fact. So this is an threat before these MSME in ability to trade. There is a working capital gap. I suppose my
Because of this thing, their working capital gap is disturbed. In fact, as most of the participants here are professional chartered accountant, I don't think I need to explain it. And many times we have observed that the account may be classified as NPA of these MSMEs without any of their fault. In fact, because if a large amount is stuck up with their debtors, they are not able to pay the interest or the EMIs of the bank, and the bank classify their account as NPA. So what is the solution then? So problems we know, but what is the solution? So today I would like to discuss one very important provision which is under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. Some protection has been given, especially to micro and small enterprises under the Micro, Small and Medium Enterprises, and protection under Insolvency Bankruptcy Code is always known to you all, in fact, much better than me. The another one is discounting of bills under trades platform. And considering this problem, we have also started a portal called www.nodefaulters.com. As far as this nodefaulters.com, my vision is that I want to see our country with no commercial disputes. And we introduced this nodefaulters.com about 3 months before. And we have already about 800 crore approximately default being reported on this portal. I always feel that, whenever any bank consider any lending proposal, they go to CIBIL, they take their CIBIL ranking. But I feel that, in addition to the CIBIL rating, they should also understand that what is the behavior of the borrower or the proposed borrower as regards to the payment to their suppliers. So that is my another dream, that if CIBIL is for financial defaulters, no defaulters is for operational defaulters. And operational defaulters, as we all know, that has been already defined under the Insolvency and Bankruptcy Code. So if you have any problem of any delayed payment of you or of yourself or of any of your client, you can just register and update on this nodefaulters.com. What we do, we approach the buyers. We try to convince them, okay, boss, dekho, we are small enterprises, please make the payment. And we have seen that many buyers have agreed to make the payment of these MSMEs. So that is one. The another is protection under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act. Perhaps I will stress upon more on this, and I would also like to invite as many questions as possible on this subject. सर इसमें मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, जस्ट फॉर enlightening our clients also, कि जो आपका ये पोर्टल है, तो इसमें रजिस्टर करवाने के लिए या हमारी कुछ रिकवरी होती है, तो व्हाट आर द फाइनेंशियल टर्म्स? इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन शेयर, अदरवाइज वी कैन स्किप इट ऑफ. तो हम ना सर, इसमें क्या होता है कि परहैप्स देयर इज सम स्मॉल अमाउंट फॉर रजिस्टरिंग ऑन दिस पोर्टल, कुछ 400-500 या ऐसा कुछ है सर उसमें, राइट? ओके. And then we approach the buyers, pre-recorded calls by our team members, and those things are done. So this protection under Micro, Small and Medium Enterprises is available to micro and small enterprises. This Act says section 15 to approximately section 25 covers this protection under Micro, Small and Medium Enterprises to the micro and small enterprises. So it says that payment to any micro and small enterprises, please just remember that I am always will be referring to micro and small enterprises here under this presentation, because most of the schemes, most of the facilities being provided under MSMED are for micro and small enterprises. There is rarely any scheme which is available to medium enterprises. So only enterprises which are either micro or small will be able to take benefit of this protection.
So this the act says that payment to any micro and small enterprises by any buyer has to be made within 45 days. If they don't make the payment, then compound interest with monthly rest to the supplier at 3 times of the bank rate notified by Reserve Bank of India is to be paid. Even if they don't pay, then reference is to be made to Micro and Small Enterprises Facilitation Council, MSC-FC. So 2-3 things here. When this act is saying that payment is to be made within 45 days, suppose there is an agreement between buyer and seller, and they both decide that payment will be made in 60 days, 90 days, 120 days, what will happen? So act is very clear that even if you agree to make or receive the payment beyond 45 days, interest is payable with monthly rest to the supplier at 3 times of the bank rate notified by Reserve Bank of India beyond the period of 45 days. So if the period is 90 days being agreed between both buyers and sellers, so okay, but payment will be required to be made with interest for balance 45 days. Means up to 45 days it's okay, but for the balance 45 days, if the payment terms are 90 days, will be required to be paid. So I am quite confident that most of the chartered accountants being present here will definitely be asking their clients to make the provision of interest where there is any outstanding of any amount for these micro and small enterprises. We all know that there is one form number MSME 1, which need to be filed every 6 monthly, April to September on 30th October and October to March on 30th April. There also a very important provision is there that it may be that as on date, maybe as on 30th September, there is no outstanding which is beyond 45 days for any micro, small and medium enterprises. But still, if during this 6 months period, there is any delay by any enterprise to the micro and small enterprises, that has to be reported in that form. So please, आप सभी जो भी ऑडिटर हैं या कंसल्टेंट हैं किसी भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के, प्लीज you yourself will be ensuring that interest is provided, and you can also advise your clients to make the payment to these micro and small enterprises. You can also advise most of the time what happens, in fact, maybe some large company or the government department or the government company or the PSUs, they may take the benefit that we are not aware whether this company or this enterprise is registered MSME or not. So one suggestion, as I already told, in fact, that you for yourself and also for your clients, please ensure that the Udyam registration is printed on the top of the invoice, and at the bottom there should be a footnote that we are a registered micro small enterprises, and our payment need to be made in 45 days. Otherwise, interest is payable under the provisions of MSME Act. So something like this, in fact, can be a footnote on the invoice, so that tomorrow they don't take this as excuse we were not aware whether you are a registered micro and small enterprise. So this is section 15, which I already सर इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अगर आप महाराज मुझे हेल्प करेंगे तो सर जैसे एज एन एडिटर हम अकाउंट कंफर्मेशन मांगते हैं, जब हम अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि इस तरह का इसके ऊपर प्रोविजन करा जाए, एंड दे डोंट डू इट, और कंफर्मेशन के टाइम पे हमारे को सर्टिफिकेट नहीं देते, जहाँ इंटेंशनली रोक लेते हैं, जो व्हाट एवर द रीजन फॉर दैट इज देयर, तो उसका क्या वे आउट है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि दिस पर्टिकुलर सप्लायर इज MSME, इज देयर एनी पोर्टल अवेलेबल through his PAN number or something like that, whereby we can look into it and check as an auditor or as a consultant he is an MSME? So what normally the companies are doing nowadays, and you may also insist or advise your clients, in fact, in that respect, that let them send a mail to their suppliers
that please let us know. अभी तो जितने vendor registration forms वगैरह जो भी हो रहे हैं, I suppose every company, large company have started this column in their vendor registration form that whether you are a registered MSME. If yes, what is your Udyam registration? What is the category of your enterprise, micro, small, or medium? But normally, what the companies are doing, they are sending a mail, in fact, to their suppliers that we need to understand if you are registered under micro, small, and medium enterprises. If you are registered, please let us know within, maybe you can give a time period of 15 days, 10 days time. And if you can also mention that if will not receive any confirmation from your side, we will assume that you are not a registered micro, small, and medium enterprise. Something like this you can advise to your clients, sir. Sir, we have been doing this thing, and I'm telling you, हमारे पास 95% replies नहीं आती. नहीं और as far as you know, we are doing work for some very very big companies, 2.5-3 रुपए जिनकी करोड़ टर्नओवर है, तो वो हमेशा चिट्ठी लिखते हैं, जब हमारे को नहीं बताते हैं, otherwise there is some lacuna in it. यानी I mean to say कि there is no portal or something like that available whereby through PAN number or GST registration number we can understand he's a SME or not. Unfortunately, the answer is no, sir. Thank you very much. Because so we have also requested this thing to the Ministry of MSME, but वो पता नहीं, I don't know what is the reason behind this. But हमने तो उनको बोला कि देखो पैन हम किसी का देख सकते हैं, पैन नंबर हमें पता हो, उसकी हम डिटेल ले सकते हैं, और बहुत सारी चीजें आर अवेलेबल इनफैक्ट. सो व्हीकल की हम डिटेल ले सकते हैं, सो इनकी डिटेल लेने में भी, but unfortunately Manoj ji, answer to your question as on today is no. There is no portal because there is, as I told you, the Udyam registration or Udyog Aadhaar .gov.in. These two portals are there where you can get your registration, but there is no tab, in fact, on that portal that by which you can search whether this company is registered under MSME or not. We are telling them that, see boss, Ministry of Corporate Affairs site is there, you can find anything about the company, in fact, and it will always be in the benefit of these MSMEs also. But unfortunately, Manoj ji, no. As on today, no facility is available to verify, to check whether the company or the enterprise is registered as MSME or not. Sir, एक क्वेश्चन मेरा छोटा सा और है, that is related to IBC for MSME. कि मैंने जितनी भी सेक्शन 9 की एप्लीकेशन फाइल करी, उसके अंदर जो आपने हमारे को भी बताया कंपल्सरी क्लास है 15 दिन के बाद इंटरेस्ट रिकवर करने की और समथिंग लाइक दैट. तो जब भी मैंने अपना क्लेम विद दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर सीडी या उसके आरपी के पास फाइल करा, या इनफैक्ट यू नो इट हैपेंड विद एनसीएलटी आल्सो इन वन ऑफ माय केस, I don't remember the name of the case, कि उन्होंने इवन यू नो जो हमने इनवॉइस के ऊपर लिखा हुआ था हमारा एमएसएमई है, नीचे लिखा हुआ था कि हमारे को अगर आप इतने दिन के बाद पेमेंट करोगे तो आपको ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा. So neither NCLT or nor any of our IP ever accepted this interest dues to us. ममता जी, आप बताइए आपका कैसे होता है जब आप क्लेम फाइल करते हो या क्लेम एक्सेप्ट करते हो? नवनीत जी आप भी बताइए, और संदीप जी भी हैं, तो संदीप जी यू कैन आल्सो शेयर. ममता मैम अनम्यूट कर लीजिए. ममता मैम अनम्यूट करिए, एक मिनट. Yeah, thank you. No, the same trouble is there with us, what you mentioned. I completely resonate, Manoj ji. Same issues, same troubles. Same here. But what you do, since you are we are not making provisions. Suppose you are an RP in some case, and there is some claim from some MSME along with the interest. You accept that claim or you don't accept that claim? I am not accepting that claim. You're not accepting. But this is, may I just know, for the sake of my knowledge, in fact, because this interest provision is absolutely according to the provisions of some act. So any. वैसे तो वो interest act भी apply करके भेज देते हैं. So interest act is there as per the legislative bodies. So we are not taking the interest act. But ma'am, I think in fact this very good thing has been brought before us,
आइडली अगर कोई MSME करके भेज रही है, एंड इवन इफ वी एक्सेप्ट, देयर इज नोबडी कैन चैलेंज दैट, रादर वी शुड एक्सेप्ट, आई थिंक, बिकॉज़ इट इज अभी जी फिर इंटरेस्ट एक्ट में भी क्या कमी है वो भी बताइए, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैं वो भी समझना चाह रही थी कि इंटरेस्ट एक्ट जो है वो भी एक लेजिस्लेटिव एक्ट है, तो उसका फिर हम लोग क्यों नहीं ले रहे? ये We have Sandeep Goyal जी also, संदीप जी, इफ यू कैन आल्सो शेयर, ये चीज तो है, क्योंकि ये एक अच्छी चीज निकल के आ रही है, सर ने एक अच्छी चीज पे ध्यान दिला दिया सभी का, कि अगर कोई MSMEs इंटरेस्ट के साथ कर रही हैं, एंड इफ वी आर नॉट एक्सेप्टिंग, लेट अस से tomorrow if that person goes to the NCLT and says, sir, this is as per the provisions of the specific act, and nobody is allowing us, then again the action will fall on RP only. नवनीत जी, मेरा डिफरेंट इसके बारे में एक्सपीरियंस है। इवन मेरे केस के अंदर NCLT में यानी कि मैं MSME का सप्लायर था और मेरी एप्लीकेशन थी सेक्शन 9 के, तो NCLT ने ही अलाउ नहीं करा कि आप बेस्ड ऑन इनवॉइसेस और दिस थिंग कर सकते हो। इसके ऊपर जुडिशरी प्रेसिडेंट भी है, I can share it with you also. They say कि until unless it is mentioned in the purchase order कि आपको पेमेंट नहीं मिलेगी तो आप उसके अगेंस्ट उतने पैसे लोगे, हम आपको सिंपली बेस्ड ऑन द MSME एक्ट हम आपको इंटरेस्ट पोर्शन अलाउ नहीं करेंगे। इसके ऊपर NCLT की, और आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर, बट NCLT की जजमेंट तो है, हो सकता है NCLAT की भी कोई जजमेंट हो। Might be possible, but I think ideally ये ऑर्डर चैलेंज हो सकता था, एज पर माय ओपिनियन, प्योरली माय ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि अगर एक्ट में प्रोवाइड किया गया है और स्पेसिफिकली पर्सन क्लेम कर रहा है एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ, हाउ कैन वी से? हम देखिए, अगर हमारे जो होम बायर्स होते हैं उनके अंदर प्रोविजन है, हमारा IBC रूल्स के अंदर, रेगुलेशंस के अंदर 8% तक इंटरेस्ट एलो किया जाता है, वहां पे भी तो हम एलो करते हैं ना, जब उनके क्लेम वहां पे IBC के अंदर लिखा हुआ इसका अलाउ करते हैं। मेरा सिंपली सर ने जो हमारे को एनलाइटन करा कि हमारा जो राइट है MSME एक्ट के अंदर, जो 3 times ऑफ दिस इंटरेस्ट एंड बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑल दिस थिंग, वो हमारी प्रैक्टिस अभी शायद डेवलप नहीं हुई, एंड उनके एनलाइटन के बाद वी नीड टू थिंक फॉर दैट, एंड परफेक्टली राइट सर, परफेक्टली राइट। पर देखिए, मेरा तो आप सबसे, सिंस आई कंसिडर मी एज एन MSME, दो यू ऑल आर आल्सो MSME, बट मुझे लगता है कि वी ऑल शुड स्टार्ट इन फैक्ट कंसिडरिंग दिस इंटरेस्ट वेयर एवर इट इज वेल विद इन द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर दैट पर्पस। Sir, I fully agree and absolutely endorse your view also. ममता जी, हम एक काम करते हैं, हम ना एक MSME की कमेटी बनाते हैं अपने IFA के अंदर, सर को उसके अंदर चेयरमैन बनाते हैं, एंड इस तरह की जो डिफॉल्ट्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ इधर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस, दोनों चीजें क्लब्ड हैं, एंड वी टेक अप दिस मैटर विद द हायर अथॉरिटीज, इधर थ्रू IBBI और थ्रू NCLT, तो आई एम ऑल्सो अवेयर ऑफ इट। In fact, when I am as an auditor, I am also sending lot of balance sheets, और जहाँ पे मैंने नहीं देखा कोई प्रोविजन क्रिएट करता हो, और क्या कहते हैं नवनीत जी, थोड़ा सा आपको मैं ये हेल्प कर देता हूँ कि इसके अंदर जो एक्सक्यूज हमारा आता है ना, वो मेरा ये एक्सक्यूज आता है लीगल वे से कि जब ऑडिटर ने ही बैलेंस शीट के अंदर इसका प्रोविजन नहीं करा, या उसने यानी शो नहीं करा, तो एज एन RP व्हाई शुड आई इंक्रीज द लायबिलिटी ऑफ द CD जो कि ऑलरेडी दिक्कत में है। बट सर मुकेश सर, वी आर रियली एनलाइटेड एंड थैंकफुल टू यू कि ये हमारे को थोड़ा सा इसके लिए, जब हम MSME की बात कर रहे हैं और हमारी PM सर और जो हमारी पूरी गवर्नमेंट कहती है कि MSME इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री एंड वी मस्ट एनकरेज टू डेवलप इट, तो ये हमारा जो राइटफुल ड्यू है ये हमारे को IBC के अंदर भी लाना चाहिए और इसको लेने की कोशिश करनी चाहिए। ट्रू सर, थैंक यू वेरी मच। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। नहीं बिल्कुल सर, इसमें मतलब मेरे ख्याल काबरा सर कुछ कहना चाहते हैं शायद, पर प्लीज मैं देख रहा हूँ रेस हैंड्स किया उन्होंने, कोई मिस्टर हर्षादित्य काबरा जी, प्लीज उनका अलाउ करिए। एक मिनट। मैं फ्रॉम पूना प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे हमने एक चीज देखी है सर कि समाधान पोर्टल के ऊपर भी जब भी जाते हैं तो ऑलमोस्ट वन ईयर तक दे आर नॉट टेकिंग द केसेस ऑन द पोर्टल, और हर टाइम में एक ही आंसर दिया जाता है कि हमारे पास मैन पावर नहीं है, और इवन
पिटीशन भी जो डिपार्टमेंट को भेजना चाहिए वो भी क्लाइंट को ही बोला जाता है कि आप ही सब कुछ स्पीड पोस्ट करके जाओ और हमको लाके दो से। सो कहीं तो भी इसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए सो दैट वो आगे तो भी बढ़े इस चीज को। जी, I'll cover this. Very good. But I'll definitely discuss on this issue. सर सेम इशू मैं इंदौर से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और ये जो अभी सर ने बोला सेम इशू यहाँ पे भी फेस हो रहा है। उसमें एडेड प्रोफेशनल इशू ये आता है कि हम एज अ कंसल्टेंट एंड सर्विस प्रोवाइडर क्लाइंट को अश्योरिटी नहीं दे पाते। क्लाइंट का पेमेंट अटका हुआ है, वो हमको फीस तभी देगा जब उसको अश्योरिटी मिलेगी कि आप उसका पेमेंट निकलवा दोगे। बिकॉज डिपार्टमेंट के साइड से या हायर अथॉरिटीज के साइड से थोड़ा लेगुना या डिले होता है, उस कारण हम अश्योरिटी दे पाते हैं, हम कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाते हैं, इसी कारण क्लाइंट लगता है कि हम केपेबल ही नहीं है। तो उस चीज को हम कैसे फाइट करें? Definitely, I'll cover this, sir. I'll cover. मुकेश मोहन जी, इन नटशेल सब लोगों की कंप्लेंट ये आ रही है कि एमएसएमई की जो भी साइट है या जो भी एक रिट्राइवल के लिए एक प्लेटफॉर्म है वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा। और इनफैक्ट पहले भी वेबिनार स्टार्ट होने से पहले भी मेरे को प्रवीण जी ने फोन करके कहा था कि आप ये क्वेश्चन पूछना। तो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से भी, सिंस यू आर वेरी वेरी क्लोज टू द एमएसएमई मिनिस्ट्री, और आप क्लोज ही नहीं हो, आपकी बात सुनते भी हैं। You know, I share it with my all professional colleagues here. He enjoys very good power in the government, and government listens to him also. तो सर थोड़ा सा आपको ये प्रॉब्लम पता होगी, बट हम आपको दोबारा थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज फॉर द बेनिफिट ऑफ और एमएसएमई इंडस्ट्री आप थोड़ा सा गवर्नमेंट को वेकअप करने की कोशिश करें। सर मैं आपको बताता हूँ, अभी आई वाज इनवाइटेड एट विज्ञान भवन आल्सो रिसेंटली to give an address in fact, और इसमें ये बिल्कुल प्रॉब्लम है। I'll discuss. I am myself a member of some of the MSCFC जो फैसिलिटेशन काउंसिल होते हैं। हमने उसमें कोशिश किया है, लेकिन काफी बदलाव आ गए हैं, काफी बदलाव आने हैं। मैं आपको एक शेयर करूंगा एक पीपीटी। हमने क्या किया है अभी रिसेंटली, वी डिड इट इन फैक्ट, we used to send many suggestions to Honorable Prime Minister, Finance Minister, Minister of MSMEs, and I'm fortunate to have reply of almost every suggestion. In fact, I sent to. I got a number of letters from the Honorable Prime Minister and other ministries also. Whenever I sent, what we did, in fact, we have prepared a document for जैसे अभी आजादी का अमृत महोत्सव बन रहा है 75th year. So we have drafted 75 suggestions for the ministries. Particularly for the MSME sector. I will share it with you, Manoj ji, also, and Madam Mamta ji also. You can have a look on it, advise us where to make some improvement in that. We'll send it to the government and we'll try to find out some better solution in fact. और मैं जैसे खुद मैं MSCFC में मैं खुद मेंबर हूँ कुछ दिल्ली की। दिल्ली में करीब 11 MSCFCs हैं. Every district has MSCFC. So let me first answer the question, in fact, which has been raised by the two participants about the functioning of this portal, which has been developed by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, and the name of which is Samadhan. तो उसमें ये प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम का रीजन मैं आपको बता देता हूँ क्या है। बिकॉज डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज की चेयरमैनशिप में ये MSCFCs बनाई गई हैं, और डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज आर ऑल द टाइम ऑलमोस्ट बिजी इन सम वन और द अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। तो उनके पास ये एक एडिशनल बर्डन हो गया। तो उनको कोई इसका बिल्कुल भी चार्म नहीं रहता कि हम इसकी मीटिंग कर पाए। मीटिंग करते हैं तो वो पता चलता है कि वो डेफर कर दी उन्होंने। उस दिन वो सब MSME गए, वहाँ पर वो मीटिंग ही नहीं हुई है, केस कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, कभी कोई मेंबर नहीं आ रहे हैं। So these problems are there, but I can assure you that government is very serious on this Samadhan portal and on the issues of delayed payment to micro, small and medium enterprises. अभी एक गडकरी साहब जब थे तो he did a international events on this particularly delayed payment. I was also invited to give a presentation in that international event. So उसमें काफी मतलब जो हमारे सजेशंस थे काफी मान लिए गए हैं। जैसे पहले क्या होता था, हर स्टेट में एक MSCFC होती थी जो फैसिलिटेशन काउंसिल होती थी।
सो वी आर इंसिस्टिंग टू द गवर्नमेंट कि भाई देखो ये जो एक MSCFC से काम नहीं चलेगा आपका, बिकॉज सपोज यूपी में यू हैव 1 MSCFC इन कानपुर, अर्लियर दे वर हैविंग, और कोई नोएडा में है, कोई आगरा में है, यू नो, गोइंग टू द कानपुर इन फैक्ट फॉर ए मे बी ए स्मॉल outstanding of 1 lakh, 2 lakh, 5 lakhs or even 10,000 is not feasible. So हमने उनको कहा कि आप ये हर डिस्ट्रिक्ट में कीजिए, तो कम से कम उन्होंने अभी कर दिया, हर कमिश्नरेट में कर दिया उन्होंने। दिल्ली में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं, दे हैव एक्सेप्टेड आवर रिक्वेस्ट, दे डिड इट इन एवरी स्टेट, इनफैक्ट 11 की 11 स्टेट में। बहुत सारी और ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर उन्होंने 5-5, 6-6 MSCFC स्टार्ट कर दी हैं। सो थिंग्स आर हैपनिंग। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ, MSCFC का जब कोई अवार्ड आता है तो देन अगेन ए प्रॉब्लम स्टार्ट्स, इनफैक्ट उसका एग्जीक्यूशन पिटिशन इज अगेन ए टीडियस टास्क। तो कुछ स्टेट्स ने ये किया कि वो रेवेन्यू रिकवरी एक्ट के अंतर्गत जो वो RC सर्टिफिकेट इशू करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो उन्होंने जो अवार्ड हैं इनके MSCFC के, उसके अंतर्गत ले आए। तो 3 या 4 स्टेट्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दैट। अभी हमने कहा है कि वो शायद कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ ऐसी बात हो कि ये सभी स्टेट्स के लिए ये कंपलसरी हो जाए। इस एक्ट की जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम एक है वो ये है कि इसके कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। मतलब ये जो सेक्शन 15 से 25 के बीच में भी जो मैं बता रहा हूँ, पर्टिकुलरली यू नो प्रोटेक्शन अंडर दिस MSMED एक्ट, इसमें भी ये हो रहा है कि हर स्टेट ने अपने अलग अलग रूल्स बनाए हैं, और खुद कभी हमें भी दिक्कत होती है क्योंकि किसी स्टेट ने कहा कि भाई जैसे अभी एक हमारे जो पार्टिसिपेंट थे, ही वाज टेलिंग कि जब हम जाते हैं वो कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई मैन पावर नहीं है या ये प्रॉब्लम है। दिस इज द वेरी बिग प्रॉब्लम इन फैक्ट बीइंग फेस्ड बाय दिस MSCFC। वो कहते हैं कि हमारे पास ना तो कोई स्टाफ है, ना कोई सेक्रेटरियल स्टाफ है, ना हमारे पास इसके लिए कोई भी 1 रुपए का कोई फंड है। गवर्नमेंट में तो हर एक्टिविटी के लिए अलग से फंड चाहिए, तो वो कहते हैं कि हमारे पास कोई इसके लिए कोई फंड एलोकेटेड नहीं है। तो उनको प्रॉब्लम होती है कि जो मेंबर हैं, कई बार उनको दिक्कत होती है कि वो कहते हैं कि हमें आने जाने का कुछ खर्चा दे दीजिए, कौन उसको टाइप करेगा, कौन प्रिंट आउट निकालेगा। एज यू राइटली टोल्ड कि वो कहते हैं कि भैया ये आप ही स्पीड पोस्ट कर दो। वो इसलिए कहते हैं कई बार कि उनके पास होता है कि उनके पास कोई फंड ही नहीं है, वो कहाँ से किस फंड से उसको वो स्पीड पोस्ट भी कर सकें। तो गवर्नमेंट में ये प्रॉब्लम्स हैं। तो वहां हमने उनको एडवाइस किया कि भाई आप कुछ थोड़ा बहुत पैसे ले लो, आप उसमें थोड़ा 500-1000 रुपए आप ले लो, आप ऐसा चलो, अगर आपको ऐसा इतना बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो सम स्टेट्स हैव स्टार्टेड दिस थिंग। मैं आपको पर इसमें भी मैं आपको क्या बताता हूँ, देयर इज ऑलवेज लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस, और क्योंकि उनका ये मेन काम नहीं है। मैं एक दिल्ली की MSCFC में आई एम मेंबर। तो जब मैंने ज्वाइन किया और मैंने पहली दूसरी मीटिंग में जब मैं गया तो मैंने देखा कि वो कोई थोड़ा बड़ा अमाउंट था, और उन्होंने कहा कि भाई आपने वो स्टैम्प ड्यूटी जमा कर दी। तो मैंने पूछा कि ये कुछ 1.5 लाख रुपए की करीब कुछ उनकी स्टैम्प ड्यूटी उन्होंने कहा कि वो जमा कर दो आप। तो उसने कुछ केसेस में जमा कर भी रखी थी, बट उसके कई केसेस थे। तो उसने कहा कि सही, मैं वो कर रहा हूँ, बस सर कल कर दूंगा। तो मैंने आज कि ये कौन सी स्टैम्प ड्यूटी आप इनसे जमा करा रहे हो? कि सर वो जो इनकी आउटस्टैंडिंग है उसके बेस पे स्टैम्प ड्यूटी जमा करनी है। तो मैंने बोला ऐसा तो कोई एक्ट नहीं है, ये MSCFC में देयर इज नो प्रोविजन टू डिपॉजिट स्टैम्प ड्यूटी। तो उन्होंने कहा नहीं सर वो तो हम लेते हैं 2% या कुछ उन्होंने बताया। तो हमने कहा दिखाओ जरा अपना रूल्स अपने कौन से हैं आपके। सो दे शोड मी द रूल्स ऑफ दैट स्टेट इन फैक्ट। तो वहां पे उसमें लिखा था एक जगह कि 1 एफिडेविट इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन फ्रॉम द MSCs ऑन द रिक्वायर्ड स्टैम्प and the required stamp duty need to be paid for that, something like this was mentioned. हमने बोले तो 10 रुपए का स्टैम्प पेपर चाहिए भाई साहब इसको। वो एफिडेविट के लिए स्टैम्प ड्यूटी वाज रिक्वायर्ड टू बी पेड, इन फैक्ट दैट वाज रिलेटेड टू ओनली स्टैम्प ड्यूटी। हमने तभी उसी दिन मैंने बोला जितने से आपने ली जस्ट रिफंड इट बैक टू ऑल इन फैक्ट, एंड आई टोल्ड दैट नो स्टैम्प ड्यूटी इज टू बी पेबल बाय यू अंडर दिस MSCFC। तो ये प्रॉब्लम है कि हर स्टेट के थोड़े अपने अपने नियम हैं, और क्योंकि ये उनका कोई प्राइमरी कोई उनका ऑब्जेक्ट नहीं है, उनके पास इसके लिए कोई बजट एलोकेटेड नहीं है। बट दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ द स्टोरी। द पॉजिटिव साइड ऑफ द स्टोरी इज आई हैव सीन इन मेनी केसेस कि एक गवर्नमेंट से जब एक नोटिस जाता है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जब एक नोटिस जाता है, it mean for the entrepreneurs in fact, and I have seen that many cases
कि नोटिस जाने के बाद ही वहां से जो अपोजिट पार्टी है दे कॉन्टेक्ट टू द सप्लायर दिस एमएसएमई और उनको बोलते हैं भाई साहब क्या कर रहे हो, आप बैठते हैं ना, बैठ के हम बात करते हैं। आई एम वेरी एक्टिव ऑन दिस। हम तो क्या करते हैं, अगर जैसे कभी कोई ऐसा केस हो तो प्लीज जस्ट लेट मी नो आल्सो। हम तो क्या करते हैं, अगर जैसे हमारा चैम्बर भी है, चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और हम लोग तो ये करते हैं कि अगर एक सर्टेन पीरियड के बाद, मतलब 1 महीना 2 महीना हो गया, because there is a provision in the MSMED Act that you know, if any reference is filed on this Samadhan portal, it has to be completed within 90 days. तो 90 दिन के अंदर पूरा हो जाना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। बट जैसे प्रोविजन तो आईबीसी में भी है, 14 दिन का भी है। सो इट इज लाइकवाइज इट इज हियर आल्सो लाइक। तो वहां हम ये करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा टाइम ऐसा हो जाता है कि 2-3 महीने हो गए एंड द केस इज नॉट इवन कन्वर्टेड और कोई एक भी हियरिंग नहीं आती, आई माई सेल्फ विद माई सिग्नेचर राइट लेटर टू देयर स्टेट चीफ मिनिस्टर, टू द पर्टिकुलर डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, and I have seen that at least 90% or more letters are replied. जवाब आते हैं, हमारे को जवाब देते हैं, उस लेटर्स पे 10 जगह सिग्नेचर हुए होते हैं, they send it to us also, they instruct even the chief minister office instruct to the concerned director of industries, और फिर वो हमें कोशिश करके फोन करके we ensure कि उनका केस शुरू हो। So ये है, समस्या है, लेकिन perhaps with the team, in fact the leadership this IPA has, in fact if we can join hands in some way or the other, perhaps a good team definitely can have a better results, in fact, as far as the recovery of this micro small medium enterprise is concerned. नवनीत जी, एसके शर्मा जी ने हाथ खड़ा करा, तो प्लीज जरा उनको अनम्यूट करिए और उनकी बात सुनिए, व्हाट ही वांट्स टू से। मिस्टर एसके शर्मा, प्लीज। नमस्कार सभी को। मुकेश जी, मुझे एक जानकारी लेनी है कि एक बार जब अवार्ड पास हो गया और एज ए एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकवरी के लिए वो डीएम ऑफिस में पहुंच गया और डीएम से तहसील में चला जाता है, कोई डाटा अपने पास अवेलेबल है एमएसएमई का कि एक पर्टिकुलर स्टेट में कितनी एमएसएमई की रिकवरी हुई है? क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। गवर्नमेंट का जो है जोर होता है अपनी रिकवरी करने पर, जो उनके एरियर्स होते हैं, और वो मैंने देखा है कई स्टेट में जो उनके अपने स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है उनकी रिकवरी नहीं कर पाते हैं वो। जैसे यूपी में वो होता था, उत्तर प्रदेश स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन पिकअप होता था, और दिल्ली में है। तो कोई डाटा अवेलेबल है कि एमएसएमई का कितना रिकवर करके दिया है स्टेट्स ने? तो मैं आपका जो क्वेश्चन है वो 2 पार्ट में है देखा जाए तो। एक तो आप एसएफसीज के लिए कह रहे हैं, बिकॉज एसएफसीज में क्या होता था, देयर इज अ स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट। नहीं, मैं एसएफसी की बात नहीं कर रहा, मैं तो खाली, मैंने एक एक्सपीरियंस है मेरा, मैं खाली एमएसएमई का समझना चाहता हूं कि एमएसएमई का डाटा अवेलेबल है कि कितना एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकवरी करके दिया है। मैं समझ गया आपका शर्मा साहब, बट मैं जस्ट फॉर द नॉलेज एंड फॉर टू ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स, इन फैक्ट मेनी ऑफ us will be aware of this thing, but एक SFC Act है, उसमें एक सेक्शन 29 होता था, which was much earlier than this सरफासी Act also. So उसमें सेक्शन 29 of the SFC Act ये कहता था कि if any state financial corporation, they were given the powers, in fact, under section 29 to take over the possession of the asset of the borrower without any intervention of the court. Securitization Act फिर उसके बाद में आया, और वो जो सेक्शन 29 में वो पोजीशन लेते थे, फिर वो उनका आरसी जो रिकवरी सर्टिफिकेट है उसके लिए वो दे यूज टू सेंड इट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको तहसीलदार के पास भेजता था, और वो अपना 10% लेते थे ऑफ द रिकवरी अमाउंट। इनफैक्ट दैट इज द प्रोविजन, इनफैक्ट कि अगर रिकवरी सर्टिफिकेट देंगे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल चार्ज 10% फी ऑन द रिकवरी अमाउंट, और वो फिर जाके वो मनादी पीटता था, ढोलक वोलक भी बजाता था, सुनो 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 इस बकायेदार ने पैसे नहीं दिए। बट वो खैर उसकी एक स्टोरी एक अपनी अलग है कि वहाँ क्या था। maybe on this forum I would not be interested to refer. We all know what happened, in fact, to these state financial corporation. Almost every SFC is now defunct. No SFC is operational as on
whether it's pickup also, you refer to pickup also. So pickup is also not just on recovery mode only. They are not doing any financing. So जितनी SFCs थी और ये जो institution थे state government के, वो सभी fail हो गए. As far as your question related to that amount is concerned, so मैं पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो रिकवरी एक्ट के थ्रू, रिकवरी सर्टिफिकेट के थ्रू जो प्रोविजन है अवार्ड रिकवरी करने के लिए, वो अभी सब जगह एप्लीकेबल नहीं है. दैट इज एप्लीकेबल ओनली विद 3 और 4 स्टेट्स इन फैक्ट, राइट. जो रिकवरी है उसका जो डेटा है, नेटवर्क चला गया था जरा, एक सॉरी मेरा नेटवर्क चला गया था, जरा बताएंगे थोड़ा. सॉरी शर्मा जी, आप एक काम करिए, वी हैव लिमिटेशन फॉर टाइम आल्सो. आप सेम बिल्डिंग में हो, ये भी न्यू दिल्ली हाउस में, आपका ऑफिस न्यू दिल्ली हाउस में था. मेरा न्यू दिल्ली हाउस में नहीं है मेरा. नहीं सर, मान के चलते हैं, चलते हैं. आप इनको जरा ले लेना, बिकॉज वी हैव सम टाइम लिमिटेशन. तो हमारा ऑलरेडी ये वेबिनार का टाइमिंग 4:30 था. इट्स ऑलरेडी क्रॉस अराउंड 5 मिनट रह गए हैं. तो सर प्लीज ब्रीफली शर्मा जी का जवाब देके देन यू प्लीज मूव फॉरवर्ड. मैं शर्मा जी आपको ये कहता हूँ, समाधान पोर्टल पे ये जो डाटा आप मांगना चाह रहे हैं वो सारा डाटा अवेलेबल है ऑन दिस समाधान पोर्टल, राइट. तो वो डाटा तो अवेलेबल है कि कितनी रिकवरी हुई, स्टेट वाइज भी आप देख सकते हैं, वो सारा डाटा अवेलेबल है. बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिकवरी सर्टिफिकेट के थ्रू इस जगह एप्लीकेबल नहीं है. सो मुकेश सितेश जी ने भी, स्पाश जी ने हाथ खड़ा किया. हाँ, प्लीज क्वेश्चन है. Mukesh ji, I have one question. See now, I applied to this Mumbai MSE FC for one of the clients' recovery. Now what happened is, once I put up a reference, it took around 2 to 3 months time, and then after they have rejected it, citing a very poor reason that PO was not attached. Pardon? Now there PO, purchase order is not attached. So I have not given them details of purchase order. And the fact was that there was no purchase order raised for that particular goods delivery. So in that case, what I would suggest is they should not be having power directly to reject reference. They should be asking us first of all if they have any query, and if we cannot fulfill their query satisfactorily, then they should be they should have right to reject it. So here once they reject, it again takes 2 to 3 months time to make a fresh reference and explaining the things and all that. So could you please put up this also with this MS government, that they should not have right directly to reject the references without asking the revert from the client, because it becomes very tedious otherwise. Yeah, I got your point. So I would answer your question in fact, and we'll try to find out the solution of this problem. See, in the Samadhan portal, since you are already using this, there is a provision that you need to upload the document, you need to upload the work order, you need to upload the invoices. So purchase order and invoices are to be uploaded on Samadhan portal. What happens if you don't have the purchase order? So there is a provision that if you don't have the purchase order, you please file an affidavit mentioning all this fact that we don't have the purchase order. Whatever the supply was made under this invoice was as per the requirement by the buyer, either telephonically or personally. So you can submit an affidavit. There is a provision. Then you can, instead of purchase order, you can file an affidavit. But your question is, and your issue is very important and very logical, that before calling you, before giving you an opportunity that why you have not enclosed the purchase order, and if you not enclose the purchase order, what is the remedy being available to you? As I told you, the affidavit, they should have not rejected. So my request is you kindly take my email ID, or you kindly send the details to Manoj Anand sir. He may refer it to me, and we'll definitely take it up with the, because see, we, as I told, we do a lot of we provide a lot of submit a lot of suggestions to the government and ministry, and this delayed payment is very close to my heart in fact. But when we submit any suggestion along with the live case, that will be very important. So please do share the details with us. I'll talk. I'll do that, sir. Maharashtra mein there are various MSCFCs. Yes, sir. So there Aurangabad mein hai, Thane mein hai, Pune hai. there are various MSCFCs. So I am quite sure that
their chairman will definitely be knowing to me, or I'll also be knowing to him. Okay. I can talk to them personally also. Please do share. Sure, sir. Thank you. Thank you very much. Yes, sir. Please carry on your deliberation, please. So this is section 16. We say that the rate of interest is payable from which date? As I told you, after 45 days interest is to be paid, but this 45 days will start from where? So this section tells that from the acceptance of the invoices. Be liable to pay compound interest with monthly rest to the supplier on the amount from the appointed date, or as the case may be, from the date immediately following the date agreed upon at 3 times of the bank rate notified balance. So this is the date. The section 18, I have already clarified that reference has to be made to the MSCFC. So this is the portal which we were discussing, that every reference has to be made online. But friends, just remember that, after filing online application, most of the states have now made it mandatory to file a physical copy also along with this affidavit. Many MSCFCs have specified forms, some form A, form 1 on our portal, which I refer to you, nodefaulters.com. What we did, in fact, we compiled these references of all the states, in fact, related to this delayed payment issue, and the complete informations are there, because under this act, MSME Act, it was mentioned that for the delayed payment, these states will form their own regulations. One draft regulation was given to them, and based on that draft regulation, every state has drafted their own regulation. We have compiled regulations of all the states. कहीं पर कोई फीस देने की जरूरत है, कहीं पर कोई स्पेसिफाइड फॉर्म है, कहीं पर कोई सॉफ्ट कॉपी में देने से ही केवल काम चल जाएगा, हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है. सो एंटायर रेगुलेशन आर अवेलेबल फॉर ऑल द स्टेट्स ऑफ द कंट्री. I was referring to you that is to be decided within 90 days from the date of making such reference, which actually is not happening at all. And to file your application on this Samadhan portal, Udyam registration is mandatory. So what are the required documents? Required documents are because if you have to log in on this Samadhan, has to be done through the Udyog, the Aadhaar number. In case of a proprietorship concern, unki honi chahiye. In case of partnership firm, any of the partner. In case of company, LLP, or any other constitution, anybody who is being authorized by way of a resolution, वो अपना registration करा सकते हैं. तो वो आधार नंबर और उसका जो लिंक मोबाइल नंबर है, that will be required for filing this reference on this समाधान पोर्टल. क्योंकि जब हम करेंगे तो वहां पर एक OTP आएगा, और OTP आने के बाद ही आप ये जो प्रोसेस है वो पूरा कर पाएंगे. एंड यू नीड योर उद्यम रजिस्ट्रेशन, बायर डिटेल्स, वर्क ऑर्डर एज आई वाज रेफरिंग टू, व्हिच वाज raised by Magia ji. And in case work order is not there, you can file an affidavit also and the invoice. So this is the portal which looks like this. In fact, e-Samadhan portal we call it, and it's samadhan.msme.gov.in. और यहाँ पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर एक केस फाइलिंग एंटरप्रेन्योर एक टैब है ब्लू कलर का, इसको आप क्लिक करेंगे तो वो आपको ये जो, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपना जो आधार नंबर है वो डालना होगा, एक मोबाइल पर OTP आएगा वो डालना होगा, और आपको उसको वेरीफाई करना होगा. When you will do it, you will see this screen, which is a pre-filled screen, pre-filled form, in fact, wherein based on your information, this Udyog Aadhaar or Udyam registration, your company name, and your address, phone number, mobile number, email ID, everything will be visible to you. You can just recheck and confirm it. Then you need to submit the bias detail. So bias detail mein you need to tick whether it's an individual, partnership, proprietorship, what is the constitution, what is the name of the respondent, address, what is the state of the respondent, address, their mobile number, their email ID,
and what is the amount of default. So please fill up this form very carefully, because whatever mail ID you will mention here, the MSCFC will send a mail, in fact, at this mail ID only. As far as the jurisdiction is concerned, that is also important. So yahan par, as in IBC, the jurisdiction is where the corporate debtor is registered. In case of this MSCFC, jurisdiction is where the supplier MSME registration is available. So agar my unit is in, suppose my unit is in Noida, and I register my company under Udyam registration, definitely I have to mention that, factory address at Noida. If the buyer is of Mumbai, the jurisdiction will be Noida. So then you have to upload the work order and invoices. You can upload 3 work order and 3 invoices at one time. That is the provision. But I would like to share here a very important thing, that if you have more than 3 work order or more than 3 invoices, it will be very difficult for you to complete this form, because आप 3 invoice करके again you will go back and again you will complete the entire process. So you can make a PDF file. In fact, even if there are 100 invoices, you can just make one file, one PDF file covering all 100 invoices, and you can upload only one file. Sir. Hello. Yes, sir. Yeah, now voice is clear. Actually, मैंने सबको म्यूट कर दिया था, पीछे से कुछ आवाज आ रही थी. अच्छा, yeah, now clear. आपकी आवाज clear है. Please carry on. अच्छा, okay. So now this screen will be there, that you can. Yeah, screen is there. बिल्कुल. So no, so this screen will be after you will file the complaint, in fact, for the non-payment. So this screen will be there. Here you can just verify the details of for the final submission, your detail, your buyer's detail, amount, everything will be there. I suppose my puppy is barking. Just 1 minute. Okay. So just recap that, log on to samadhan.msme.gov.in, click case filing for entrepreneurs or / MSc unit. There is a tab. Enter Udyog Aadhaar memorandum number, enter your Aadhaar number, mobile number, verification code, submit the OTP. Then there will be a pre-filled form, applicant MSME unit. Enter your respondent detail, buyer's detail, their phone number, address, everything. Upload the work order and invoices, verify complete details, and submit it. So friends, this is the complete process of the Samadhan portal. If you have any question, please ask, and I'd be happy to answer that. Insolvency, I don't want to discuss here, because all are more learned than me. सर, इसमें अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, हमारी लिमिट जो 1 लाख से बढ़ा के इन्होंने 1 करोड़ कर दी, it happened approximately 2-3 years ago, और all of a sudden ही हुआ था ये, because we are also in great touch with the IBBI and seminars also. कहीं पे भी ये डिस्कशन नहीं हो रहा था कि हम जो लिमिट है 1 लाख से बढ़ा के एकदम 1 करोड़ कर देंगे. हाँ, ये 10 लाख की या 15 लाख की फॉर ऑपरेशनल कैडर्स या फाइनेंशियल कैडर्स की 2 लिमिट्स आने की बातचीत हो रही थी, 25 लाख 10 लाख समथिंग लाइक दैट करते. तो इसको जो लिमिट बढ़ी है, ये हमारे सिंस यू स्टार्टेड विद आईबीसी, तो आईबीसी पे जो लिमिट बढ़ी है, इसने कैसे एमएसएमई सेक्टर को अफेक्ट करा है, नेगेटिवली या पॉजिटिवली? देखो सर, though we all know that insolvency and bankruptcy code is not a recovery code, but this code was definitely helping the MSME in a very big way. And जो असली रिकवरी हो रही थी वो इसी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड से हुई. एंड बहुत सारे ऐसे केसेस हैं फ्रॉम इवन द गवर्नमेंट आल्सो. वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग द रिकवरी फ्रॉम इवन BHEL आल्सो, many other big corporates. I don't want to name here, in fact.
लेकिन ये जो लिमिट बढ़ने से, बिकॉज एमएसएमई के लिए तो समझिए अब ये करीब खत्म हो गया है, खत्म हो गया। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, बिकॉज एक देखिए इंस्टॉल जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है वहां तो फिर भी अगर मल्टीपल फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं यू कैन गो, बट इन केस ऑफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर तो उसका अकेले का होना चाहिए फ्रॉम वन पार्टी दिस 1 crore रुपीज, राइट। तो ये बहुत ही कम ऐसी एमएसएमईज हैं दोज हु हैव दिस 1 crore आउटस्टैंडिंग इनफैक्ट फ्रॉम वन पार्टी। सो ये लगभग, और जैसे आपने कहा कि एनसीएलटी में राइटली टोल्ड दैट एनसीएलटी may not be considering the interest also, right, for calculating of this threshold limit of 1 crore rupees. So ये MSMEs के लिए मैं समझता हूँ कि काफी बहुत ही एक सेटबैक था, और दो तरफ से MSMEs को इसमें प्रॉब्लम होती है कि जब कोई वो अपना तो इससे रिकवरी करा नहीं सकते, अपना केस कोई फाइल कर नहीं सकते इसमें, और जब कोई और किसी वजह से कोई केस एडमिट हो जाता है तो these MSMEs are not able to get recovery of their payment. And मेरा हमेशा मानना है, आई एम फाइटिंग फॉर दिस, इनफैक्ट जितनी मेरी कोशिश है, जितनी मेरी ताकत है, मैं उससे मुकेश जी एक रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे मनोज जी भी हैं, विद मनोज जी परमिशन, कि वी वुड लव टू बी पार्ट ऑफ एनी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन जो कि गवर्नमेंट को जाए आपके एसोसिएशन के माध्यम से, और हमारे जॉइंटली एक हम रिप्रेजेंटेशन दे दें to lowering the limit of this IBC cases practically, because that will definitely help MSMEs जैसे आप बता रहे हैं। तो हमने अभी जो हमने सजेशन बनाया, मे बी मंडे आई विल बी सबमिटिंग, बट मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करके आई विल शेयर इट विद दीस 75 सजेशंस इन फैक्ट, और फिर हम सेंड इट जॉइंटली आल्सो सर, इट विल बी माय प्लेजर इन फैक्ट। श्योर सर। और हमने उसमें 10 लाख का हमने कहा है उसमें कि पर्टिकुलरली फॉर MSMEs Yes, sir. 10 lakh rupees in fact, that is a suggestion we have put in. Sir, what in my opinion is that कि operational cadre की लिमिट लगनी होनी चाहिए, फाइनेंशियल कैडर की लिमिट लगनी होनी चाहिए, और ऑपरेशनल कैडर की लिमिट जो 10 लाख रुपया कह रहे हैं दैट इज रिजनेबली ओके। और चाहे लोग इसको गलत कहते थे कि आईबीसी को इज नॉट ए रिकवरी टूल, लेकिन ये हमने देखा था, हमारे पास छोटे छोटे क्लाइंट्स आते थे, वो बहुत सारे क्लाइंट्स अपने जो बड़ी कंपनी से उनसे इस आईबीसी का थ्रेटन के बेस पे अपने बिलों की पेमेंट करवा लेते थे। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपको एक लाइव केस बताता हूँ। वी फाइल ए केस इन फैक्ट ऑफ वन ऑफ द MSME अगेंस्ट नवरत्ना कंपनी, गवर्नमेंट की, राइट। तो वहां पर उनको शायद ऐसा लगा कि हम तो नवरत्ना है, हमसे क्या होगा, एंड द अमाउंट वाज नॉट वेरी लार्ज इन फैक्ट, सो कुछ 50-60 लाख रुपए का था। नवरत्ना के आप समझो क्या बैलेंस शीट साइज होता है। सो उन्होंने आके ना कोर्ट में कुछ इसी तरह से बोलना शुरू किया कि वी आर नवरत्ना और ये वो। सो द ऑनरेबल NCLT टोल्ड वेरी स्पेसिफिकली कि देखो हमें नहीं पता तुम नवरत्ना हो 10 रत्ना हो। There are these 3 provisions which are now visible on my screen also, and we are bound to admit it. So you go to your management, आप उनको बता दो, because आपका ये तीनों condition पूरी हैं, right? You have not raised any dispute, you are a corporate, default is more than 1 lakh rupees. So even their MD called me, in fact, he fixed up a meeting with me, I met with him. He told sir this is learning for you. हमें तो ना तो हमारे पास ना तो उन तक किसी ने पहुंचाया था और ना उनको ये पता था इतना तब उस टाइम पर कि ये ऐसा भी मे बी टुडे एवरीबडी विल बी नोइंग इन फैक्ट, एंड दे इमीडिएटली मेड द पेमेंट। एंड खाली पेमेंट नहीं करा उनका, उन्होंने कहा कि सर ये ऐसा नहीं है, बिकॉज इट्स ए गुड लर्निंग फॉर अस आल्सो, हम इनको और काम भी देंगे, ऐसा भी नहीं है कि हम इनको दे गिव इमीडिएट लगता है। तो उन्होंने उनको साथ में काम भी दिया, उनको एक दूसरा एक छोटा एक टेंडर दिया उनको कि आप ये भी ले लो आप हमसे। आपने सर इसमें आपकी बात को थोड़ा सा एक्सटेंड आउट करता हूँ। आपके केस में एमडी साहब ने आपको बुला लिया, बड़ी अच्छी बात करी। मेरे सिमिलरली ये केस में कंपनी का नाम ले लेता हूँ, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन। इस तरह का एक उन्होंने ना मेरे से बात करी ना कुछ करा, जबकि मैं उनका कंसल्टेंट हूँ, यानी कि दे डिडंट थिंक ऑफ कॉलिंग, बिकॉज वहाँ पे ना एमडीज वगैरह बड़े फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे थे। तो जो पुराने वाले एमडीज थे दे वर इन टच विद मी, उनके केस एनसीएलटी ने ऑर्डर पास कर दिया। और आपको तो सर पता ही होगा, तो दैट इज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कंपनी जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ। अल्टीमेटली देन ऑर्डर पास होने के बाद तो उन्होंने मेरा नाम सुन रखा था, तो देन दे कॉल्ड मी अप
एंड मैंने कहा जी कुछ नहीं करना, 12 के अंदर बैठ के सेटलमेंट कर लो और काम खत्म। यू आर सपोज टू डू नथिंग मोर देन। कह रहे जी वो तो इंटरेस्ट मांग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं कहा जितने पैसे मांग रहा है ना उसको दे दो, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। अब जो सेटलमेंट का प्रोविजन है वो सीडी और सिर्फ बायर का प्रोरोगेटिव है, और ये इसके अंदर किसी का कुछ नहीं चलेगा। तो एंड अल्टीमेटली दे सेटल्ड विद हिम एंड withdraw the application before formation of the COC. ऐसी केस में इवन इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का, परहैप्स यू विल बी अवेयर, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड हैज ऑलरेडी बीन एडमिटेड, उस पे स्टे लगा है। खैर दैट वाज आल्सो फाइल्ड। तो सर कहने का मतलब ये है कि जैसे आप डिस्कस कर रहे थे, ये जो देखिए गवर्नमेंट की इंटेंशन स्पेशली इन द हायर अप बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज आती है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट फेल्स। जैसे आपने कितना अच्छा रिकवरी प्रोसेस है एमएसएमई के अंदर कि आप ऐसा करोगे, ऐसा होना चाहिए, वैसा करोगे, लेकिन आप बता रहे हो कि वो कहते हैं जी हमारे पास पोस्ट के पैसे का प्रोविजन नहीं है, यू नो दीज आर ऑल टेम एक्सक्यूजेस। वी कांट एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम आईएएस पीपल और पीसीएस पीपल कि वो ये कह रहे हैं जी मेरे दफ्तर के पास ये नहीं है, वो नहीं है। अगर नहीं है तो घर बैठो ना आप व्हाई यू आर रनिंग द गवर्नमेंट, यू नो। सर हमारे को आप देखो ना, यू नो मैं आईपीएस के बिहाफ पे अपना काम करते हुए अगर मैं कोई प्रोसीजरल लैप्स भी कर दूं, यानी कि अगर मेरे को 3 दिन के अंदर नोटिस देना था, पब्लिक नोटिस देना था, नहीं दिया मैंने, 5 दिन के अंदर कर दिया, तो मेरे को ना आईबी पे टांग देती है उल्टा, मेरा लाइसेंस सस्पेंड कर देती है, तो 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो आप तो सर मेरे से बेटर जानते हैं। तो व्हाट यू नो, until unless we have the responsibility with these government organization, जो हमारी टॉप गवर्नमेंट के थॉट्स हैं, जो फैसिलिटीज हैं, वो रूट लेवल तक कभी नहीं पहुंचेगी। यस सर, प्लीज कैरी ऑन। करेक्ट करेक्ट। और इसमें हमने ये भी एक कहा कि भाई देखिए ठीक है, इन द वाटरफॉल मैकेनिज्म दिस, बिकॉज दीज ऑपरेशनल क्रेडिटर्स एंड मोस्ट ऑफ दोज आर एमएसएमई, वो तो एकदम बिल्कुल दे आर एट द बॉटम इनफैक्ट, तो उनको कुछ मिलता नहीं है। तो हमने ये भी उसमें सजेशन किया कि भाई इनको भी कहीं तो आप कुछ आप एक परसेंटेज फिक्स कर लो उनकी, कहीं पे आप इनको कुछ यू मेक सम प्रोविजन इनफैक्ट कि उतना अमाउंट विल बी earmarked for these operational creditors in fact. तो बिकॉज होता क्या है, इसका कास्केटिंग इफेक्ट क्या है, आई ट्राई टू कन्विंस दिस थिंग टू यू नो द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो। हमने बोला देखो इन्होंने भी बैंक से पैसा ले रखा है, इनका पैसा नहीं मिलेगा अगर, तो ये कल ये भी बैंक में एनपीए होंगे और फिर इनके अगेंस्ट भी कोई ये आईबीसी फाइल करेगा। सो कास्केटिंग इफेक्ट विल बी ग्रेट इन फैक्ट। Yeah, thank you, Mukesh ji. It's already 5:15. Our scheduled ending time was 4:30. तो हमारा कितना टाइम अभी और लगेगा, so that we plan accordingly? अगले 3-4 मिनट में खत्म कर दूंगा सर। नहीं सर, 3-4 मिनट नहीं, 15 मिनट दीजिए प्लीज। सैटरडे शाम है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी किसी मूवी का टिकट विकट बुक कर रखा होगा या डिनर पे जाने की तैयारी होगी। So we should not come in between of those family engagements. So I'll take another 5 minutes. So one is the discounting of bill through trade receivables electronic discounting system, which is TRAD. इसमें यह है कि this is an online exchange platform, and as on today there are 3 such platform available to these MSMEs, where whenever any MSME supply any goods to any specified buyers. So I'll just explain what are the specified buyers. All central public sector enterprises and the private companies having turnover of more than 500 crore are the specified buyers. उन सबको गवर्नमेंट ने कहा है कि यू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन दिस ट्रेड प्लेटफॉर्म, और फिर एमएसएमईज का जब भी उनको कोई इनवॉइस जाएगा दे विल अपलोड दिस ऑन the particular platform, particular exchange. As I told you, there are 3 platforms, और वहां पर there are number of lenders available over there. वो तुरंत उसको डिस्काउंट कर देते हैं, और डिस्काउंट में भी रेट्स what we these MSMEs are getting are very charming. Why? Because the discounting of these invoices are not based on the credit worthiness of these MSMEs. It is based on the credit worthiness of the buyers in fact. तो अगर किसी बिल को BHEL ने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ऐसी किसी कंपनी ने या किसी टाटा की कंपनी ने, कोई रिलायंस कंपनी ने, उन्होंने अगर कभी एक्सेप्ट कर लिया तो जो लेंडर्स हैं जिनके उनके पास अकाउंट है, तो सपोज किसी का एक मे बी अडानी ग्रुप का कोई अकाउंट है, तो द बैंक नोज एवरीथिंग इनफैक्ट इनके यहाँ तो पैसे भैया हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहते हैं, so they immediately discount at a very good rate in fact.
So ये बहुत ही अच्छा rate of interest भी मिल जाता है, they discount. And the another beauty of this trade platform is that it's without recourse, meaning thereby that if suppose on the due date the buyer doesn't make the payment, the banker, the lender, they cannot come back to the supplier. So this I already explained to you. So that's all. And I have this YouTube channel, not very good thing, but I suppose many of the schemes have been explained by me on this MSME Helpline YouTube channel also. So that's all from my side. Manoj ji, over to you, sir. Thank you very much, sir. मुकेश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग अस. इनफैक्ट हम लोगों ने 15 मिनट रखे हुए थे पैनल डिस्कशन के लिए, लेकिन व्हाट आई फील इज दैट कि हमारा पैनल डिस्कशन, आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी और इतनी लाइटेंट थी कि हम लोग बीच बीच में ही आपके साथ मिलकर पैनल डिस्कशन करते रहे और यू नो वी आर एबल टू सेव टाइम ऑन दैट अकाउंट. नवनीत जी, अब किसी का अगर हैंड है या किसी का अगर यानी कि क्या कहते हैं चैट बॉक्स के अंदर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज टेक दैट. एंड एक क्वेश्चन था सिर्फ प्रैक्टिकली उनका इस रिलेटेड था कि क्या इंफॉर्मेशन MSFC के जरिए जो सेटलमेंट्स वगैरह होती हैं या कुछ वैसा है, तो क्या कहीं पे अवेलेबिलिटी है उसकी, क्या चीज है, किसी भी पोर्टल पे डिटेल्स अवेलेबल हो? तो सर इसके लिए बहुत दिनों से मैं काफी लड़ाई कर रहा हूँ सरकार से. हम उनसे ये कह रहे हैं कि देखिए, जैसे आज कोई भी ऑर्डर हमें चाहिए, NCLT का चाहिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यू नो एवरीथिंग इज अवेलेबल इन अ सर्चेबल मोड इनफैक्ट ऑन दोस. अगर बट यहाँ ऐसा नहीं है. वो हमेशा बात एक्सक्यूज यही होते हैं कि यार ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है. बट परहैप्स आई कैन से दैट यू नो I have been able to convince them to some extent in fact, और वो एक कॉमन पोर्टल बना के अभी it is going to be started in. मैं अगर आप परमिशन दे तो मैं ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत सारे छोटे छोटे आंसर दे दूं इनके. हाँ सर, प्लीज. तो पूछ रहे हैं कि संतोष जी पूछ रहे हैं कि आर द रिकवरी एंड इंटरेस्ट प्रोविजन सेम इन केस रिकवर्ड फ्रॉम बायर हु इज आल्सो एन MSME. संतोष जी देखिए, यहाँ पर केवल कंडीशन ये है ऑफ द सप्लायर्स ओनली. बायर कैन बी एनीबडी. बायर कैन बी लार्ज कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट कंपनी, अनदर MSME, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, व्हाटएवर. सो बायर के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर. बायर कैन बी अनदर MSME आल्सो. सेम हैपन टू द बिगेस्ट EPC कंपनी. ये कुछ और चल रहा है. We should add data of recovery by OC through IBC NCLT cases during less than 1 crore limit, since limit is raised. मैं देख रहा हूँ कोई क्वेश्चन आएगा जैसे ही मैं जस्ट. How much number had gone to arbitration from Delhi MSCFC during the year 2021-22 and during the period from 1/4/22 to up to date? सर ये तो सरकार के पास भी नहीं होगा. It is very difficult. Data मांग रहे हैं. See, I raised a question in fact to the minister directly. There is a number in fact, 6.33 crore MSMEs are there in the country. You go to the website of DC MSME, there was an annual report. In fact, they put annual report every year on the website of DC MSME. वो करीब 4 साल पहले या 5 साल पहले there was this figure 6.33 crore MSME. जब भी आप सुनेंगे किसी मिनिस्टर से आप सुन लीजिएगा 6 करोड़ से ज्यादा MSME हैं, 11 करोड़ हमारे उसमें एम्प्लॉय हैं, 45% कंट्रीब्यूशन है, 30% GDP में कंट्रीब्यूशन है. तो मैं पूछता हूँ ये कहाँ है ये 6 करोड़ MSME? आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन ऑन ओपन प्लेटफॉर्म आल्सो फ्रॉम द मिनिस्टर्स इनफैक्ट कि सर वो कहाँ पर हैं. भाई आपको तो पता होना चाहिए कि वो कौन सी यूनिट है 6 करोड़. आपको तो उनके पास सब डाटा है, सब नंबर उनका सब होना चाहिए. सो इवन गवर्नमेंट डजंट हैव. अभी करीब 90 लाख यूनिट्स हैव बीन रजिस्टर्ड. तो ये डाटा प्रवीण जी देना मेरे लिए, शायद मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं नहीं दे पाऊंगा. अच्छा, some but he's saying that Mumbai MSCFC takes 300 rupees per case filing for posting. Okay. That PO question was there, so that I already replied. So I suppose most of the questions have already been taken up during the process also. So
So Manoj ji, still if something is there, just let me know. सर पीपीटी की डिमांड आ रही है, पीपीटी आप शेयर कर दीजिएगा मनोज जी के साथ ताकि सभी को वो सर्कुलेट कर दी जाएगी। जी बिल्कुल जी, ओवर टू यू मनोज जी। थैंक यू नवनीत जी। ममता जी आप हो या अनम्यूट हो, यानी कि No, no, गाड़ी में हो? who can Mamta lead ji. the session? Yes, Who can yes, lead no, the no, session? yeah. तो प्लीज से सम वर्ड्स फॉर मिस्टर मुकेश जी, Okay. फिर उसके बाद मैं कंक्लूडिंग मार्क्स फिर मैं दे दूंगा प्लीज। Acha, acha. No, no. Thank you very much, Mukesh ji. We have been very fortunate to know you for long, and I think that's the biggest earning of ours, that these relationships that we earn out of knowing each other. Thank you for adorning our platform, and it will be great if we can work on it more. It was a very, very enlightening session, I must say that, and very, very gripping. We were constantly on it. Very informative. I think a lot of it we can use it while we are at work. Thank you. Manoj, over to you. thank you ma'am, Thank you. Yeah. Thank you very much. You know, we are having two personalities in our webinar today. In fact, if I compare our attendance is also increasing day by day. I would like to summarize with three things. One is that मुकेश जी हम आपको आईपा में बांध लेंगे, हम आपको किसी ना किसी आप एमएसएमई में एक्सपर्ट हो और हम थोड़े बहुत आईबीसी में एक्सपर्ट हैं और दोनों ही सफरर हैं, यानी कि उनकी आईबीसी भी इस समय बहुत बुरी तरह से सफर कर रहा है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजन। तो इनफैक्ट आईबीसी ने आईपीएस को कितना सफर करा आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। उसके लिए भी हमने आपसे बेहतर कोई, सर मैंने कहा ना हम तो इनफैक्ट बाद में पैदा हुए हैं, आप तो यू आर द स्टार्टेड एवरीथिंग क्वाइट इनिशियली। So what I mean to say is that we are very much keen to get you associated. इसी एक्सटेंशन में हमने कमिंग वीक के अंदर हमने एक स्पेसिफिकली प्रोग्राम रखा है बिकॉज डीसी के केसेस में बहुत ज्यादा स्पर्ट आ रहा है और हमारे आईपी ब्रदर्स काफी परेशान हैं। जब वो परेशान है तो हमारे को टच में रहते हैं, ममता जी से बात करते हैं, मेरे से बात करते हैं, एंड वी नीड टू टेक केयर फॉर देम आल्सो। तो प्लीज आप थोड़ा सा हमारे साथ ज्वाइन करने की कोशिश करना इफ पॉसिबल इन द कमिंग वीक। हम आपको लिंक वगैरह सारा भेज देंगे, पहली बात ये है। और दूसरी यानी कि बात ये कि एक हम लोग कल भी एक प्रोग्राम कर रहे हैं विच इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द गीपा। प्रवीण जैन जी आप हो यहाँ पे या निकल गए? आई थिंक प्रवीण जी है नीचे तो चले गए। हाँ चले गए। तो जो हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है पर्सनल कंटेंट्स के ऊपर, banks are also giving a lot of cases for the personal content and we are also the the new thing for us. तो मुकुल साही जी भी उस पे मेरे साथ था, यानी कि he is a honorable chief guest there and me is a speaker there. तो अगर मेरे को brothers को if they require तो they can join us tomorrow also for that particular webinar. वो जैसा कहते हैं for me it is a way of learning. टाइम तो निकालना बड़ा मुश्किल होता है हर किसी के लिए, संडे एंड सैटरडे जो भी है, बट आई फील दैट दिस इज फॉर मी अ वे ऑफ लर्निंग। तो ये हमारा है और एक्सक्लूसिवली हम डीसीज के लिए, बिकॉज डीसी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक तो आईपीएस के पास काम नहीं है। इफ यू सी अराउंड अप्रोक्सीमेटली वी हैव 4,500 आईपीएस, 4,500 आईपीएस में से 3,000 के करीब या 3,500 करीब आईपीएस है जिनके पास काम नहीं है। अब उनमें से बाकी बचे 500-700 आईपी जिनको मुकुल साहे जी, पीएनबी, एसबीआई, तो ये दो बैंक वगैरह अच्छा काम दे रहे हैं, जब बाकी बैंक भी काम दे रहे हैं तो वो देते हैं, जब प्राइवेट का काम उनको मिलते हैं, जब वो काम करते हैं तो इट्स रियली शॉकिंग। हम लोग सीए है, हम लोग सीएस है, हम लोग एडवोकेट है, हम लोग सीएमए हैं और हमारी ऑलरेडी हम इंस्टीट्यूट्स के अंदर उनके साथ मेंबर्स है, अपना उनके साथ मिलकर हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम उनके डिसिप्लिनरी केसेस की देखें और यहाँ पे आने के बाद हम देखें, और एवरेज जो एज है ना आईपी की मैंने एनालाइज करा, इट इज अराउंड 50 ईयर। यानी इट्स नॉट दैट कि कोई यंग सा लड़का उसका बड़ा ग्रीडी सा है या बड़ा वो नोइंगली अननोइंगली यानी कि वो कुछ ऐसा करना चाहता है वेयर बाय ही कैन ब्रिंग बैड नेम टू द आईबीसी, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल आर वेरी मैच्योर, things are so delicate in IBC, whether in the rules or regulation, कि इनको पढ़ने और समझने में, और these are so fast paced as an IP. When we work as an IP now, we understand कि how much big pressure we have, especially if you get some big client. तो उसके अंदर गलतियां is bound to, पर इनफैक्ट ये गलतियां हमारे से ही नहीं होती, जो भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर काम करते हैं सबसे होती है, बट फॉर प्रोसीजरल लैप्सेस
DC is taking very big fault for this thing. उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कमिंग वीक के अंदर हमने कॉलिंग सीनियर एडवोकेट्स सैटरडे को सेम टाइमिंग पे हमने एक डेलिब्रेशन रखा है. तो आई वुड रिक्वेस्ट माय ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड स्पेशली IPs देयर टू जॉइन अस. और मुकेश जी सर, मैं आपसे भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा, इनफैक्ट मैं आपसे पहले भी बात करूंगा बिकॉज यू आर हाईली एक्सपीरियंस इन इट. यानी कि अंदर की बात, बाहर की बात, बीच की बात, ऊपर की बात, नीचे की बात, सब आपको पता है. तो सो दैट यू कैन गाइड अस, यू कैन हेल्प अस. तो दीज आर दी माय टू थिंग्स. और रही बात PPT की, जो मेरे केसेस हैं वो मैं शेयर कर दूंगा. मुकेश सर से भी PPT लेके हम, जैसे हमने व्हाट्सएप मैसेजेस सबको दिए थे, उसी तरह से हमारा ऑफिस उनको रिप्लाई करके सबके साथ शेयर कर लेगा. थैंक यू वेरी मच. मुकुल जी, थैंक यू वेरी मच. You have been with us throughout the meeting. Or please, यानी कि closing remarks with reference to MSME banking or IBC, please share it and then we close it down. Thank you, Manoj ji. Today's session has been very informative and very interesting, and especially Mukesh Gupta sahab delivered very important points on e-trades and that Samadhan. So moreover, it has been a very interactive and very informative session, and definitely it is going to benefit larger section of person, especially who are attending this session. And from bankers' point of view, some new things were also there for me today to learn. And so I'm quite hopeful that in the days to come, when we will be communicating or deliberating on this platform on the different issues or different topics, it will definitely going to enhance our knowledge, and lot more new things will come into the discussion that will ultimately that will accrue benefit to all of us and to the economy as a whole. So thank you very much, Mukesh ji. Thank you very much, Manoj ji. I'm really thankful to the participants who remained with us throughout this session. जबकि हमारा ये 4:30 बजे खत्म होना था, 5:30 बज गए हैं. They were with us. We are really thankful to them, especially to Dr. Abhiman Singh, Subit ji, Deepak ji, Sandeep ji, Vikas ji, and Sunil also, and Santosh Goyal also. Thank you very much. With this note, we are closing the meeting. Thank you.